हेलो फ्रेंड्स। द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। इसमें आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को हम लोग कवर करेंगे। पहला है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के लिए आर्टिकल होता है 52 से लेके 52 टू 78। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 72 क्या कहता है? 52 क्या कहता है कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए। स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया यूनियन लेवल पे, अब उसी के हिसाब से स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है आर्टिकल 152(3) टू 167। जैसे तब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से आएंगे वो देखते हैं। एक गवर्नर आएगा, चीफ मिनिस्टर आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। वहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन थे? पहला था प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 5 लोग थे। और इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये 4 लोग हैं। ठीक है। एंड नो ऑफिस, इनके लिए नो ऑफिस। वाइस ऑफ द गवर्नर, जैसे वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऑफिस होता है, उसी तरह वाइस गवर्नर के लिए ऑफिस नहीं होता है, केवल गवर्नर के लिए। सेंटर एंड स्टेट, सेम मॉडल ऑफ द गवर्नेंस, सेम मॉडल गवर्नेंस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है। द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द कंट्री। द प्रेसिडेंट क्या होते हैं? ये हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, नॉमिनेटेड हेड होते हैं, फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं इनको, सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बोलते हैं। आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 53 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, एग्जीक्यूटिव पावर टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट इधर द डायरेक्टली और थ्रू द subordinate officers, does all the work either directly through the officers subordinate to him। अब जितना भी वर्क होगा सब इनको सबॉर्डिनेट करेंगे। सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, ये सुप्रीम जो प्रेसिडेंट होते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स होते हैं, टू बी रेगुलेटेड बाय द लॉ। वाइस प्रेसिडेंट, इनको सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ये जस्ट नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया था? यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। आर्टिकल 63 क्या है? देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर, गवर्नर के लिए आर्टिकल कौन सा है? 153। देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट के लिए गवर्नर हो सकते हैं। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 1 पर्सन कैन बी द गवर्न ओनली 1 स्टेट, बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया तो 1956 में, तो 1 पर्सन कैन बी गवर्न द 2 और मोर स्टेट के लिए, एक ही गवर्नर 2-3 स्टेट के लिए गवर्न कर सकते हैं एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पीरियड में। हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं गवर्नर को, नॉमिनल हेड होते हैं ये। जैसे प्रेसिडेंट आपके नॉमिनल हेड थे, उसी तरह गवर्नर आपके नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है। गवर्नर अगेंस्ट एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो गवर्नर स्टेट के होते हैं ये क्या होते हैं? एजेंट होते हैं किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। ड्यूल रोल होता है इनका विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट एंड सेंटर, इनका ड्यूल रोल होता है। आर्टिकल 154, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट के पास होता है टू बी वेस्टेड इन द गवर्नर, गवर्नर में वेस्टेड होते हैं। पावर टू एक्सरसाइज बाय द गवर्नर आइदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। पावर डायरेक्टली भी होते हैं और सब ऑफिसर जो होते हैं सबऑर्डिनेट टू हिम इनके अंदर होते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होते हैं नॉट डायरेक्ट
इलेक्शन जो होते हैं, हम लोग प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 54। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करते हैं। इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं विधानसभा ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एडेड द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, जो पुडुचेरी विधानसभा ऑफ स्टेट में जो आपका यूनियन टेरिटरी है, एक दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये जो है ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन और जो यूनियन टेरिटरी है जैसे अंडमान निकोबार हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। हु इज नॉट इंक्लूडेड, जो नॉट इंक्लूडेड मेंबर कौन है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? पहला, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जैसे 12 मेंबर जो नॉमिनेट किया जाता है, 12 मेंबर जो नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड मेंबर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दूसरा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव असेंबली, जो गवर्नर के थ्रू जो स्टेट असेंबली में जो नॉमिनेट किया जाता है, वे लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसमें? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। जो नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं ये कौन होते हैं? जो प्रेसिडेंट के लक्ष्य जैसे लिटरेचर, आर्ट, क्राफ्ट, ये साइंटिफिक में कुछ लोग जो होते हैं गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो लोग क्या होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ओके, अब नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। जब ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है, यहाँ विधानसभा में जो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और ये जो थे दिल्ली, ये विधानसभा के जो मेंबर है वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसमें जो है विधान परिषद में जो विधानसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं वे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन होते हैं? जस्ट लाइक जैसे आपका सेंटर में राज्यसभा है, उसी तरह स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं इसमें जो नॉमिनेटेड हो गए, इलेक्टेड हो गए, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो आया, नो नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर्स को भी हम लोग हटा दिए हैं, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोकसभा एंड विधानसभा दोनों में हटा दिया गया है। इफ़ द असेंबली इज डिजॉल्व, जब असेंबली डिजॉल्व हो जाती है, द मेंबर ऑफ द सीज्ड असेंबली कांट वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जब असेंबली डिजॉल्व हो जाती है तो वो भी वोट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग सिलेक्टेड करेक्ट आंसर एंड कोड बिलो, ठीक है। पहला, आर्टिकल 4 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, 155 appointment of the governor of a state, 164 appointment of chief minister and the council of the state। अब इसमें बताइए कि कौन सा कोड सही है। ए बी सी डी जो है उसी तरह 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, ये बताइए। आइए देखते हैं। आर्टिकल 54 जो है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बोलते हैं। आर्टिकल 75 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बोलते हैं। आर्टिकल 155 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर
ऑफ स्टेट होते हैं, 160 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। ओके, अब देखते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55। द प्रिंसिपल ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है प्रायोरिटी एमंग द स्टेट के होता है, यूनिफॉर्म प्रोसेस होता है, डिसाइडेड वेटेज ऑफ द वोट्स ऑफ द एमएलए, द इक्वालिटी बिटवीन द स्टेट एंड होल एंड द सेंटर, द वैल्यूज ऑफ द वोट ऑफ द वन एमपी, जो कैसे काउंट करते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड एमएलएज इनटू 1/1000 करके हम लोग निकालते हैं, रेशियो करके निकालते हैं जो प्रेसिडेंट का वेटेज होते हैं। ठीक है, द पॉपुलेशन, द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में जो आया, द पॉपुलेशन डाटा ऑफ द सेंसस 1971 का, उसे हम लोग काउंट करेंगे टिल द डाटा ऑफ द फर्स्ट सेंसस 2016 26 पब्लिश होगा। वैल्यूज ऑफ द वोट ऑफ वन एमपी, एमएलए का ये था, एमपी का क्या देखते हैं, वैल्यूज ऑफ द वोट्स ऑफ द ऑल एमएलएज and upon total number of the elected MPs. The method of the presidential election में क्या होता है, सिस्टम proportional representation by the single transferable vote के लिए करते हैं, वोटिंग by the secret ballot पे करते हैं। This method and the winning candidate gets minus absolute majority of the vote. The quota के लिए the total number of the valid votes pulled by the one प्लस नंबर ऑफ द पोस्ट प्लस 1। क्वेश्चन हम लोग लास्ट में देखेंगे, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। The election of the president. Any dispute related to the election of the president to be decided by the Supreme Court. Decision is final. Supreme Court का decision final होगा। If election is declared void by the Supreme Court, the act does done by the person before the verdict of the account, the will remain the valid. The election of the president can't be the challenged on the grounds of the vacancies the electoral colleagues. देखो, why indirect election? The nominal head no real power, real powers with the council of minister के पास होता है। if president has the elected, the real power were given to the him, इसीलिए हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन कर देते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द यूनियन एंड द स्टेट होता है, रिप्रेजेंटेड इंटायर इंडिया एंड नॉट ओनली द पॉलिटिकल पार्टी इज अ मेजोरिटी ऑफ एट द सेंटर। हाँ, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल ट्रांसफर वोट होता है, सीक्रेट बैलेट पे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में देखते हैं आर्टिकल इसके लिए कौन सा है, 66। द मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड बोथ, जो नॉमिनेटेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर दोनों होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। स्टेट लेजिस्लेचर नो रियल और द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट डिफरेंस फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा था, मैंडेटरी फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। द 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसको 1961 में, द रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग इलेक्शन के इलेक्शन जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए ज्वाइंट सिटिंग पहले जो बनाया जाता था वो हम लोग क्या कर दिया, हटा दिया, किसमें, 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। The reason president has the function with the respect and the center as well as state. वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, ड्यूटीज इनके मोस्टली लिमिटेड टू राज्यसभा में लिमिटेड होते हैं, एक्ट एज अ प्रेसिडेंट रेयरली इन द टेम्पोरली, द लिमिटेड रोल ऑफ टुवार्ड्स द स्टेट में होते हैं, लिमिटेड रोल होते हैं इनके।
आर्टिकल 71 क्या है? ऑल डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वही हो गया, सेम ही हो गया। डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फाइनल हो गया। इफ इलेक्शन इज द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड वाइड, द ऑल एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वैलिड। द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कांट भी चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते हैं ग्राउंड्स ऑफ वैकेंसी और इलेक्टोरल कॉलेज। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 155। अब देखते हैं गवर्नर क्या है। नॉट नॉट एन इलेक्टेड ऑफिशियल, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर की अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉमिनीज टू द सेंटर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द हरगोविंद पंत वर्सेस द रघुकुल तिलक 1979। द गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर क्या होते हैं? नॉट एंड द एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वाई गवर्नर इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, सेम ही चीज जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर द इनडायरेक्टली इलेक्टेड। द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्शन कन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। नो रियल पावर होता है। डायरेक्ट इलेक्शन वेस्टेड ऑफ द टाइम एंड मनी। इलेक्शन इज लीड टू द पार्टी पॉलिटिक्स। द गवर्नर शुड बी एन empirical head, and nomination by the central government, control of the center over the state। यूएसए में क्या होता है? गवर्नर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और कनाडा में क्या होता है? गवर्नर अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56। प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है? 5 साल के लिए होता है। रेजिग्नेशन किनको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। कम्युनिकेट द सेम टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा के लिए। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट के थ्रू हम लोग प्रोसेस करके हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द मोर देन द 5 ईयर्स के भी ज़्यादा वे सर्व कर सकते हैं। अंटिल हिज सक्सेसर कम, जब तक इनके सक्सेसर नहीं आते हैं तब तक ये सर्व कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन, आर्टिकल 57। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एलिजिबल फॉर री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल हो एनी नंबर ऑफ द टाइम, नो रिस्ट्रिक्शन है। यूएसए में ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ओनली ट्वाइस, 2 ही बार। अभी एग्जांपल डोनाल्ड ट्रम्प देख सकते हैं आप। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है? आर्टिकल 67। वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल के लिए भी होता है। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। वाइस प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इम्पीचमेंट के थ्रू बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इनको हटा सकती है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैन होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द मोर देन 5 ईयर, ये भी ज़्यादा रह सकते हैं जब तक इनके सक्सेसर ना आ जाए। द एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के लिए एलिजिबल फॉर री इलेक्शन के लिए नो नंबर ऑफ द टाइम, नो रिस्ट्रिक्शन। यूएसए में ऑन नो लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ द टाइम अ पर्सन कैन बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट होता है, नो लिमिट है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए लिमिट है यूएसए में, ये याद रखिएगा। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 156। द गवर्नर क्या होते हैं? होल्ड द ऑफिस 5 ईयर्स सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो रह सकता है। टर्म ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो डिफिनेशन। द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट एंड द डिस्क्रिशनरी पावर ऑन द एड एंड एडवाइस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन एडेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सूर्य नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1981 में। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ओके, जो प्रेसिडेंट का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। द गवर्नर, द नो सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, नॉट फिक्स द टर्म, कांट बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। गवर्नर को जल्दी हटा नहीं सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। Now on the ground mentioned for the withdrawal of the pleasure of the president of India,
गवर्नर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, एलिजिबल होते हैं भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एनी नंबर ऑफ द टाइम, आइदर द सेम स्टेट और द अदर स्टेट। बोला तो था सेवेंथ कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आप गवर्नर को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं वन से मोर देन स्टेट में। गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होते हैं आपके, गवर्नर ऑफ वन स्टेट कैन बी can be transferred by the President of India to another state. The governor can hold the office from the more than 5 years each till the successor come. अब देखते हैं qualification election of the president article 58। द सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, एज 35 साल होना चाहिए, क्वालिफाइड इलेक्शन ऑफ द लोकसभा होना चाहिए, ऑफिस ऑफ नो ऑफिस ऑफ द प्रोफिट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर, ये सब पोस्ट पे नहीं होने चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, MP, MLAs and MC, not office of the profit। The term office of profit not mentioned in the constitution। जो टर्म है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ द एज अ प्रेसिडेंट, नो कंस्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन, कंस्टिट्यूशनल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट है 1952। 5 electors as a proposal, 5 electors as a senders। द सिक्योरिटी और डिपॉजिट 15,000 होना चाहिए टू बी द फोर्टिफाइड इफ सिक्योर लेस 1/6 votes। The qualification for the election of the vice president, आर्टिकल 66। सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 साल एज होने चाहिए, क्वालिफाइड इलेक्शन ऑफ द रोज राज्यसभा होना चाहिए, नो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट होना चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, MPs, MLAs एंड MLC। नो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट होने चाहिए, टर्म ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। qualification for the election of the vice president, sorry, no constitutional qualification no constitutional qualification है। the the presidential and the vice presidential election act है 1952 में। इसमें उसमें 50 चाहिए थे, इसमें 20 चाहिए। इलेक्टर्स एज ए प्रपोजल, 20 इलेक्टर एज ए सेंडर्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 15,000 चाहिए, अगर वो हारे तो उनका जब्त कर लिया जाएगा पैसा। क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर आर्टिकल 154। गवर्नर के लिए दो ही है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए ऑफकोर्स, एज 35 साल होना चाहिए। सरकारिया कमीशन क्या कहते हैं उसको देखते हैं। Formed on the center state relation 1983 to 88। recommendation for the appointment of the governor, eminent person, some sphere of the life, person from the outsiders of a state, not connected with the local politics, should not be a person from the ruling party at the center, consultation with the chief minister before the appointment of the governor, the vice president of India, a speaker of the Lok Sabha should also be the consult। Condition of the president's office, article 59। the not a member of the either house of the parliament or the state legislature। okay, if any such person elected the vacate the seat and in the house। ऐसे लोग अगर हम इलेक्ट कर लेते हैं तो उनको पहला सीट छोड़ना पड़ेगा बिफोर द इंटरिंग द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। आई शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, इंटाइटल द यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रपति भवन, without payment of the rent, the emolument allowance and privileges as determined by the presidential law। President's emolument on the Pension Act 1951 can't be the diminished in during the terms। The President Emoluments and Pension Act 1951, the salary 5 lakhs per month, 5 लाख देते हैं पर मंथ। पेंशन 50% ऑफ द सैलरी एज पर मंथ, मनी 2.5 लाख पेंशन मिलेगा उनको। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इंटाइटल एज ए रेसिडेंस, फोन, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फैसिलिटीज, सेक्रेटरीज, स्टाफ्स एंड अदर ऑफ द एक्सपेंसेस।
spouse of the decades of the president. 50% of pension of the retired president entitled to the president, phone, car, medical treatment, travel facilities, secretaries, staff, and other official pension. Condition of the vice president's office. Article 66. Not a member of the either house of the parliament, same होने चाहिए state legislature. If such person elected vacate in the house the before the entering the office of the president should not hold any office of the profit. सेम है. कंडीशन देख लेते हैं. कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द हाउस. आर्टिकल 158. गवर्नर में क्या होता है? शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए. इफ एनी सच पर्सन इलेक्टेड वके सीट को पहले छोड़ना पड़ेगा बिफोर द एंटरिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर. शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट. इंटाइटल द यूज ऑफ द ऑफिशियल राजभवन एंड द विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट. जैसे राष्ट्रपति नहीं पेमेंट करते थे गवर्नर भी नहीं करेंगे. Salary employment allowance to be determined by the parliamentary laws. No role of the state and legislature to ensure the uniformity across the country. Till the time of the parliament did not make laws. Salary emolument and allowance. As mentioned in the second schedule. 7th Constitutional Amendment Act 1956 क्या बोलता है? Same person appointment as a governor of the two more states. Salary emolument allowance salary shared by the states. If in the proportion determined by the President of India on the aid and advice of the Union Council of Ministers. Salary emolument and allowance. Governor can't be the diminished during the tenures. The governor's emolument allowance privileges Act 1982. The act passed by the Parliament. Salary 3.5 lakh per month. Oath. Oath of the President. Article 16. The components of the oath of the President faithfully executive of the office and preserve, protect, and defend the Constitution and the law. Devotee of the services, well-being of the person of India. Administered by the Chief Justice of India. Oath कौन दिएंगे? Chief Justice of India in the absence of the senior most Supreme Court judges available. Oath given under the Article 60. Article 60 में वो दिलाएंगे. To be taken by the three types of the people: president, the person acting as a president, person discharging of the duties of the person. Oath of the vice president. ठीक है. The bear true faith and the allegiance to be the constitution of India, faithfully discharge and the duties. Oath is the administered by the president of India or any other person appointment as a appointment by the him in the that behalf. Oath of the governor. Article 159. The components of the oath of the governor: faithfully executive the office of the governor to be the best of the ability, preserve, protect, and the defense the constitution and the law. The devotee of the services well-being of the people. Oath is administered by chief executive of the concerned high courts and the chief executive not available the senior most judges of the high court. Any person. The discharging of the function of the governor also required to the take the oath. Impeachment of the President of India. Article 161. Ground of the violation of the constitution. Violation of the constitution, not definition of the constitution, only on the grounds of no other grounds. Impeachment charges be initiated by the either house of the parliament. The 40 days notice in the advance and notice signed by the 1/4 of the total membership of the house of the in initiating the charges. That is a resolution of the impeachment passed by the 2/3 of the total membership of the house.
the resolution of the impeachment sent to the other house. The other house will be investigate and charge or the causes of the charge to be the investigated. The president right to appear at the this stage or other houses में the passes the resolution by the two third of the total membership of the house. The president stand removed. The impeachment में क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस होते हैं. नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट nominated member of the parliament do not participate in the election of the president. The participate in the impeachment of the president. लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के में वो पार्टिसिपेट करते हैं. इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबलीज participate in election of the president, do not participate in the impeachment process of the president. State have no role of the removal of the president. जो स्टेट का नो रोल होता है, कोई रोल नहीं होता है रिमूवल ऑफ द president, केवल इलेक्शन में रोल होते हैं, बस ये है. The removal of the vice president, Article 67. The resolution to the remove the vice president can be introduced only in the Rajya Sabha. Resolution for the removal, the Rajya Sabha majority of the membership of the house. The Lok Sabha simple majority, the majority of the members present and voting. The removal of the president 40 days चाहिए है advance notice in the Rajya Sabha. Vacancy in the president's office, Article 62. Why in the creating the vacancy? The expiration of the tenure of the 5 years, resignation, impeachment, death, disqualification of the any grounds, election of declared void and by the Supreme Court. In the case of the expiration of the tenure of the 5 year election to the elected the new president to be held the before and completion of the terms. The any case of the any deals, the existing the president will be continued to the hold the office till the time him successor come. If the vacancy is the cause due to the any other person, the election to the fill the vacancy to be held within the 6 month में कर लेना चाहिए. The vote is created the vacancy. The newly elected president hold the office for the full term of the 5 years के लिए करेंगे, not for the reminders for the term. In the case of the vacancy, death, resignation and removal, the till the time of the new president is elected, the vice president will be act as the president. Before acting as a president, vice president will have to take oath in the office of the president. The president unable to the discharge of the function due to the illness or the absence. Illness or absence, the vice president discharge the function of the president. Before the discharging the function, the vice president will be take the oath of the office of the president. If the office of the president shall be vice president vacate the office, the chief justice of India act as the president or the discharge the function of the president. In the absence of the chief justice of the India, senior most judges of the Supreme Court, if vice president, the chief justice of India, senior most judges of the Supreme Court, the acting as a discharge of the duties as the president. The same powers, immunities, emolument and allowance of the amendment as that the president. The some important facts. The two president have the died in the office till the date. Dr. Zakir Hussain, Faruquddin Ali Ahmad. Once the Chief Justice of India has acted as the President of India, Dr. Zakir Hussain died office of the President. VV Giri of the then the Vice President resigned the contest of the election of the President. Muhammad Hidayatullah, then the Chief Justice of India, acted as the President 1969. The vacancy in the vice presidents of the office.
way of to creating the vacancy, the expiration of the tenure of the 5 year, resignation, removal, death, disqualification on the grounds, and the election of the declared void by the Supreme Court. In the case of the expiration tenure 5 year, election to be elected as a new president to be held before the completion of the term. The case the delays the existing the vice president will continue to hold the office till the time his successor come. If the vacancy is the cause due to the any other person, the election to the fill the vacancy to hold soon the possible, no time limits of the mentioned in the constitution, namely elected office president hold the office of the full term 5 years, not in the remainder of the terms, the in vacancy due to the death, resignation, and removal till the time of the new president is elected. Office of the vice president to be remain the vacant. Some important facts. The Krishan Kant, the vice president, to die in the office. Krishan Kant. The power and the function of the vice president. Article 64. The vice president, ex officer chairperson of the Rajya Sabha. USA. The vice president chairperson of the Senate, the upper house of the USA Congress. Article 65. In the case of the vacancy in the president office, vice president to act as a president till the new president come, the maximum duration 6 months. The president unable to perform the function due to the absence of the illness, the vice president discharge the function of the president till the president come back. Article 64 क्या है? When the office of the president act as a discharge of the function of the president, he will not act as a chairman of the Rajya Sabha. Vice president क्या होता है? No salary and the emolument and allowance of the vice president salary as a chairperson of the Rajya Sabha के लिए मिलता है, president के लिए नहीं मिलता है vice president. हाँ. When the vice president act as a discharge of the function of the president, all powers, immunities, salary, allowance of the president. Article 65. Vice President Pension Act 1997, 50% of salary of the Rajya Sabha chairperson as a per month. Entitlement, free resistance, medical, travel, and other facilities. Some important facts. Dr. Zakir Hussain as a president died in the office. V.V. Giri acted as a president. The Faruqdin Ali Ahmad president died in office. B.D. Jatis act as a president. Dr. Radhakrishna discharged the function of the president. Dr. Rajendra Prasad when the president and the 50 days tour of the USSR. इंडियन वर्सेस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट. यूएसए में क्या होता है? व्हेन देयर इज अ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंशियल ऑफिस, द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स एंड द ऑफिस फॉर द रिमाइंडर फॉर द टर्म. द इंडिया में क्या होता है? इन द केस ऑफ द वैकेंसी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट till the new president come in. The no significant function of the Indian vice president. He is the super house's highness. Impose the create the political continuity. The executive power of the president. All executive action of the president of India in the name of the president, executive head of the union. President can be make a rules, the order taken in his name, process of the authentication of the such order. Article 77 होता है. रूल्स होते हैं. And conduct transaction of the businesses of the union, allocation of the businesses amongst the minister. Article 77. Power to task for the any information from the prime ministers the related to the office of the union or the proposal of the legislation. Article 78. The executive power of the governor.
द ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर रूल्स क्या होता है, स्पेसिफाई द मैनर्स in the each order made in the name of this authenticated by the article 60। जैसे प्रेसिडेंट के नाम पे हम लोग कोई भी ऑर्डर पास करते हैं उसी तरह स्टेट में गवर्नर के नाम से होता है। ठीक है, पावर टू मेक रूल्स आर्टिकल 166। द कन्वेंट द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेसेस, एलोकेशन ऑफ बिजनेसेस टू द मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर। जो अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर को वो कौन दिलाएंगे, गवर्नर दिलाएंगे। होल्ड द ऑफिस ड्यूरेशन प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जो ये लोग प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट है, जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है वो काम करेगा। अपॉइंट द ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, गवर्नर अपॉइंट करते हैं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अपॉइंटमेंट एज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 165 डिटरमाइंस द सैलरी। एडवोकेट जनरल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट्स करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस, रिमूवल सिमिलर टू द हाई कोर्ट। द गवर्नर अपॉइंटमेंट क्या करते हैं, चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट। Governor as has the power to seek the information from the chief minister, article 167। गवर्नर के पास पावर है, वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। आर्टिकल 167 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर, प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन कैन द रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर, आर्टिकल 167 टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल the decision taken by the individual minister, not the considered by the entire council। the power to remove the president's rule of the state, chancellor of the university होते हैं, appoint the vice chancellor। the legislative power of the president, the president इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं। पावर टू समन द purpose the both the houses of the parliament, article 85। the power to dissolve the lok sabha, article 85। the joint sitting of the both houses of the parliament, article 108। address to the president, the commencement of the first session after the general election, the first session every year, article 87। the power to the send the message to entire house of the parliament with respect to the bill sending pending in the any other matter, when the office of the speaker and the deputy speaker of the Lok Sabha is vacant, the president power to appoint any member of the Lok Sabha, the presides over the proceedings of the Lok Sabha। the similar provision for the राज्यसभा के लिए, ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन इवैकेट द गवर्नर कर सकते हैं अपॉइंट। द नॉमिनेटेड 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा, स्पेशल एक्सरसाइज ऑफ द लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विसेज एंड साइंस, द पावर टू डिसाइड ओवर द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। in the consultation with the election commission, the prior permission and recommendation of the president होते हैं। introduce the certain bill in the parliament, the money bill will under the article 3, the bill will be varying in the definition of the agriculture income, a bill in the state legislature imposing the restriction over the freedom of the trade and commerce and encourage, when the bill is sent to president after he is passed by the parliament, the president can give the assent to the bill, can be withhold the assent to the bill, not in the case of the money bill and the constitutional amendment, the bill sent back to reconsideration by the parliament, not in the case of the money bill, the constitutional amendment bill, if the bill is the passed against the president, the without the amendment, the president bound to give assent। the governor क्या होता है, bound to reserve the certain bills for the consideration of the president।
In the such scenario, the president can give the asset to bill, the withdraw the asset, the send back to the reconsideration of the state legislature. Not possible in the case of the money bill. If the bill is passed against the state legislature, not mandatory for the president given his asset. ठीक है. Article 123. The power to the promulgate the ordinance when the parliament is not in the session. The power to lay down the reports before the both houses of the parliament. Finance commission. The power to lay down report before the both houses of the parliament जब नहीं रहेंगे. The finance commission, CAG, UPSC, other reports. The regulation for the peace and the propagation of the development Andaman, Nicobar, Lakshadweep, Dadar, Nagar Haveli, Daman and Deep, Ladakh. Legislative power of the governor. Legislative power of the governor. Governor summon the prorogates the state legislature. Article 174. Dissolve the Vidhan Sabha. Adds to the state legislative. Article 176. The first session of the every year, the first session after the general election, send message to the state legislature. Article 175. Regarding the bills pending in the legislature, or the other matter, the appointment any member of the state legislative assembly. To the presided over the proceedings when their office of the speaker and deputy speaker are vacated. Any member of the state legislative assembly the presided over the proceedings when the office of chairperson and deputy chairperson are vacant. The governor nominates one-sixth member of the state legislative council. Special knowledge Special knowledge, literature, art, social services, science, competitive movements. The governor the question in the disqualification decision in the consultation with the election commission. When the bill is sent in, the governor asset to the bill withdraw the asset. With all the asset returns the bill for the reconsideration of the legislature. If the bill passed against the state legislature without the amendment, the governor bounded to give the asset the reserve the bill consideration of the president of India. The legislation endangering in the position of the state high court mandatory. If the bill is against the constitution, against the direct principle or to the state policy, against the interest of the country, national importance, dealing with the compulsory acquisition of the property under the article 31A. The governor power to promulgate the ordinance. State legislation not in session, ordinance to be the approved by the state legislature with the 6 weeks of the re-assembly. The governor power to withdraw the ordinance. On the ordinance advice state council of minister Dr. Vadhavan or state of Bihar 1986. The promulgation of the ordinance without introducing him the legislature, the consultation and the fraud over the constitution. Ordinance making the power not the submit the regular law making the power of the governor to the lay down report before the state legislature, state finance commission, state subject commission and the control auditor general and other reports. The financial power of the president, the money bill, to be introduced in the president with the prior recommendation of the president. Article 109. Caused by the led before the both houses of the parliament. Annual financial statement. Article 112. The demand for the grant.
the to be laid down in the before the Lok Sabha with the prior recommendation of the President Article 113 to meet the emergency situation. Money out of the Constituency Fund of India, Constitution of the Finance Commission, the distribute the revenue between the center and state. Article 280, the power of the governor lay down the annual finance statement before the state legislature. Money bill to be introduced in the legislature with the prior recommendation of the governor. Demand for the grant to be the tabled with Vidhan Sabha. Prior recommendation of the governor. The constituency fund of state power to the release the fund to emergency circumstances. State Finance Commission. A state finance commission constituted after the every 5 years. The financial position of the panchayats and municipalities. Judicial power of the president, the power to appoint the chief justice of India, other judges of the Supreme Court, judges of the High Court, the power to take the advice from the Supreme Court. Advisory jurisdiction. Article 143, the advice given to the Supreme Court not binding on the president. Judicial power of the governor, the consulted by the president, the appointing the judges of the High Court. Article 217, the appointment and posting and promotion, the direct and the judges of the Article 233, the constitution with the High Court, the appoints the people to the judicial service or the direct judges. Article 234, the consultation with the High Court, the diplomatic power of the president, the international agreement and the treaties, the negotiated and the signed in the name of the president, the represent India international forms, the send the receive the diplomats. The military power of the president. The President, the Supreme Commander of the Defense and the Forces of India, appoints Chief of the Army, Navy, Air Force, the power to declare any peace, the regulated by the parliamentary law. The emergency powers of the President, National Emergency. Article 352, a power of the declare emergency on the grounds of war, external aggression, armed rebellion. During the national emergency, power to modify the financial relation between center and state, power to suspend fundamental rights. Article 359, except 20 and the 21. The state emergency precedence rule. Article 356. Grounds. The failure to constitutional machineries in the state. Article 356. Failure to employ with the directives of the union. Article 365. The president during the state emergency can assign all the power and function of the state government to him. They assign the all powers of the powers to the governor and governor to him. They transfer the all power state legislature to the parliament. When the Lok Sabha is not in session, authorize the expenditure and other state from the consolidated fund of a state to be approved by the Lok Sabha. The financial emergency. Article 360, the financial emergency, financial stability on the credit situation of the India to under the threat, the power of the issue direction. The reduction of the salary and allowance, the all the people serving in the union, judges of the Supreme Court and High Court, the veto power of the president. Whenever the bill is presented to the president. Article 111, the three option: give the asset to the bill, withdraw the asset to bill not applicable in the constitutional amendment bill, send back to the reconsideration of the parliament not applicable the money bill and the constitutional amendment bill. If the bill is passed against the president without the amendment, the president bound to give asset. The president bound to give asset. Absolute veto क्या होता है? Power of the president withdraw the asset to the money bill to the bill. End of the bill exercise in the case the private member bills, the bills in the old cabinet, the bill
Bill is the state legislature represent governor constitution of India. The President Article 200. The purpose of this veto, the prevent the unconstitutional legislation, to the prevent the ill and consider the legislation the suspension veto, the power of the president to send the bill back to the president for its recommendation if the bill is passed against by the parliament by the same majority on the higher majority required with the without the amendment, the president bound to the give the asset can be the overridden. The the simple majority of the parliament not applicable to the money bill and the constitutional amendment bills. Pocket veto. No action over the bill, the indefinite delays, no position of the negative action, the constitutional banking, no time limits, the veto within the which the president has the asset to the bill. यूएसए में क्या होता है, the president is the bounded to take the action on the bill within the 10 days. The pocket of the Indian president, the deeper than the pocket of the US's president, the veto power of the president. A state of the Tamil Nadu versus state of the Tamil Nadu. 2025, the bill reserved by the governor for the consideration of the president to be decided within the 3 month. Delay beyond the 3 month, the reason of the conveyed to the state, the allowing them to in the chance to make their charges on the bill. The state required to answer the question the asked the president expeditiously. In the no reason of the 3 month, the state can be filed the petition of the Supreme Court. The amendments can be issued against the president if delays beyond 3 month. The Sakaria Panchi Commission क्या कहते हैं, recommendation to the time period of the 3 month recommended for the president take action. The bill reserved by the governor can't sit on the bill the indefinitely if the president reserve the bill on the grounds of the unconstitutionality. The should consider the Supreme Court under Article 143, the 24th Constitutional Amendment. Amendment Bill 1971, the mandatory for the President to give asset to the constitutional amendment bills. The qualified veto not available on the Indian president, available in the USA. Uh, Overridden by the legislature by the higher majority. The power of the president of USA to reject the bill, both houses of the Congress overridden over the president by the two-third majority in the each houses. Veto power of the state legislation. Article 200 of the Indian Constitution governor power to keep the bill in consideration of the president. President may give asset to the bill, withhold the asset to the bill, and the send back to the consideration a consideration of the state legislature not applicable in the case of the money bill. The state legislature can't override the veto the president. If the bill is the passed against the state legislature, the president can't bound to give the asset. The president can the exercise pocket veto. State Tamil Nadu or state governor of the Tamil Nadu 2025. The governor can't withdraw the asset to the bill in the indefinitely. The timelines. The reservation for the consideration of the president as the advice of the state council of the minister within the 1 month. The reserve for the consideration of the president against the advice by the state council of the minister within 3 months. The withdrawing the asset decision within the 3 months.
Governor. Generally, the required to the act advice of the State Council of the Minister only required by the Constitution, as is the discretion of the governor subject to the judicial review. The veto power of the governor whenever the bill is presented and the presented to the governor. Article 200 asset to the bill, the withdrawal the asset to the bill, absolute veto, the sent back to the reconsideration of the legislature, super suspensive veto. If the legislature pass the same bill again with the without amendment, the governor bound to give asset. बातें खत्म ले. A Reserve Bill of the Constitution, the President of India Act 2001, 201 on the further role of the governor. Asset to the governor no longer required. The money bill. The governor gives the asset to the bill. A reserve the bill consideration. The President of India no further role of the governor. Can't apply the suspensive veto on the money bill. A state of the Tamil Nadu versus Governor of the Tamil Nadu 2025. If the governor required to keep the bill for the consideration of the president can't withdraw the asset arbitrarily of the malified grounds. If the governor reserving the bill on the matter of the state legislature had completely power the judicial review on any governor reserved. The bill is the consideration of the president. Ordinance making power of the president. The Article 123 of the Indian Constitution power of the president to promulgate the ordinances and during the recess of the parliament when the parliament is not in the session. When one of the both both the houses are not in the session, the president is satisfied that the necessary for the president take the immediate action. The ordinance some forces as that of the laws not parallel making the power of the president. The ordinance can't be passed when the president is in the session. The Cooper versus Union of India 1970. The state satisfaction of the president subject to judicial review on the grounds of malified intention. The promulgate the houses of the arbitrarily. The promulgate the ordinances. The 20th Constitutional Amendment Act 1975. The satisfaction of the president promulgate the ordinance final. The satisfaction of the president is not subject to judicial review. 41st Constitutional Amendment Act 1978 that delete the above provision. The satisfaction of the president subject to judicial review. The president the promulgate ordinances on the all matters on the which the parliament can make the laws. Only one those matters on the which the parliament can make the laws ordinances are considered a law. Article 113 they can't take away the fundamental rights. If any ordinances against the fundamental rights can be declared void by the judiciary. Every ordinance is to be tabled before the parliament when the recess get over. Ordinances to be tabled before the parliament within the 6 weeks and the date of the reassembly of the parliament. The both if the both houses resemble the different dates, the 6 week counted from the later date जहाँ से शुरू होगा वहाँ से 6 month काउंट होगा. If ordinance is approved by the parliament, if the becomes a law, the parliament has the power to reject the ordinances. The parliament take no action. Ordinance has ceased to exist after the 6 weeks from the date of the reassembly. The president power to the withdraw the ordinances. On the aid and advice of the Union Council of Ministers, the maximum life of an ordinance 6 months of the 6 weeks. If the ordinance is lapsed or reject,
Act done under the ordinance remain the valid ordinances. Can be the representative in the nature, can't be the retrospective in the criminal matters. The ordinances have the power to the repeal, the modify the act. The act can be modified. The tax laws also the can't be used to amend the constitution. The no ordinance making the power, no ordinance making the power in the USA and UK. इंडिया में क्या होता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग द पावर होता है गिवन टू द प्रेसिडेंट to the deal with the urgent circumstances rule of the procedure of the Lok Sabha whenever the ordinances is table. The also table the circumstances that the made is the necessary to propagate the ordinances and not mentioned in the constitution as the mentioned in the rules of the procedure of the Lok Sabha. DC वाधवान वर्सेस स्टेट ऑफ द बिहार 1986 में क्या बोलते हैं, reformulation of the ordinance without any introducing it is in the assembly the fraud over the constitution unconstitutional. The ordinances making the power not in the substitutes to regulate law making the throughout the legislature. Ordinance making the powers of the governor. Article 213. The ordinance making the power of the governor. Governor promulgate the ordinances on the advice of the state council of the minister, state legislature not in the past, not in the session. Satisfy circumstances exist necessary for him to take the immediate action. Ordinances only on the those matter state legislature to the makes law. Same forces as that the laws over the under the article 13 the definition of the laws, the power to withdraw the ordinances aid and advice of the state council of the ministers, the ordinance making the power not discretionary power, the ordinance to be the led before the legislature. Within the 6 weeks reassembly over otherwise in the will be cease the existence. The 6 week of the consultate in the both houses of the assembly different from the date from the later date of the assembly. State legislature में क्या था, may pass the ordinance or the pass the resolution or rejecting it. The permission of the president of India required, while the promulgating the ordinances on the three matters. If the bill is the same matters required to the previous section from the President of India. If the bill is in the same matter, would have been the reserved for the consideration of the President. If the bill on the same matter would be have been the invalid without the President and assent. The pardoning power of the president. Article 72. The pardoning power of the president on of the India. Pardoning power of the applicable punishment is the given for the violating the union law. Punishment is given by a military court, the death sentence. The pardoning power of the president not dependent upon the judiciary. The president not a court of the appeal purpose to the pardoning power to the correct any judicial error to give the relief of the punishment of the undelays harsh. The type of the pardoning power, the pardoning the completely forgiven the person. Remove all the conviction and the punishment, commute the substitution of the one of the punishment to the another, the change from the harsh sentence to the lighter punishment, the remission, the reducing the prior the period of the sentence without the changing the character of the punishment, the respite, giving the lesser punishment and the due to the special circumstance such as disability or the pregnancy, the reprieve, the stay on the execution of the sentence for the temporary duration, the unable to convict the seeker pardon.
President power to the pardon sentence. In the case of the military court, governor has no such power. The president power to the pardon a death sentence. The governor does not have any this power. The governor can the suspend the remits and the immute the death sentence. The the Kehar Singh Union of the India 1988, the petitioners of the no right to the oral hearing by the president. President has the power to the differ from the court. The president can the examine the evidence, not in the discretionary power to the president on the aid and advice of the council of the minister. The pardoning power not subject to judicial review except there is the decision of the president modified without any applicable or the mind. The president no need to the consult the Supreme Court before the using the pardoning power. The pardoning power of the governor, Article 161. Pardoning power if the offence has been committed against the state law, and no pardoning power in the case of military court in union laws. No power to the pardon death sentence. Only President of India can do that. The governor the suspend remains the commute the death sentence but not a pardon. Considens- Contingencies. Article 70. The any other contingency to not given in the constitution, the parliament by the law decided how will be the function on the presidents be discharged. The contingency. Article 160. In the case of any contingency not the provided in the constitution, the president of India on the aid and advice union council of ministers make the provision for the discharging the function of the governor. Quasi federal features no role of the state legislature. The constitutional power of the president of India similar to the king of the UK, symbolic and the nominal. The represents the nation, does not rule the nation. And the beyond by the advice of the minister, USA president can the dismiss his secretary at any time. The Indian the president can't use his discretion to remove the ministers. The discretionary power of the president, appointment of the prime minister when the party has declared cut majority. The dismiss the union cabinet when the no confidence motion passed in against the Lok Sabha. The dissolution of the Lok Sabha if the council of the minister has been lost the majority. Constitutional position of the governor. Constitution of India matters governor required to act in the discretionary without the advice of the state council of minister. Position of the governor different from the president of India. Governor possibility to use the uh, discretion. The president of India not discretion mentioned in the constitution. Uh, in the case of the discretionary, if a matter within the discretionary of the governor, decision of the governor, final validity of the any time done by him, the can't be the question in the court of the law is the should have be not have to act as his discretionary. 42nd Constitutional Amendment Act 1946, advice of the Union Council of Ministers binding on the President of India, and the no such provision of the governor. The discretionary of the governor, the reservation of the bill considers of the President of the India, President's rule in a state, additional charges of the Union Territory, the tribal district council of the sixth schedule, Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura. Government paying the royalty for the mineral exploitation. The situational discretion of the governor. The appointment of the chief minister when the no party has been clear cut majority. Appointment of the chief minister when the chief minister dies, the resign and there is a no clear cut successor. The
A dismissal, a state council of ministers, no confidence motion passed by against them. The dissolution Vidhan Sabha council of ministers is lost majority. There's a discretionary power of the governor, no direction of issue. The president of India can consult the state council of ministers. Their advice is not binding. The special provision for the Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Sikkim, Arunachal Pradesh, Karnataka. The problems with the governor's office. If no party has a majority in the Vidhan Sabha, governor discretion choose the chief justice, the floor test, the concerns, the biasness of the time given, the floor of the test, removal of the chief minister, etc. Recommending the president's rule without the following the adequate procedures, the no uniform approach and the biased behavior, the reserving the bill of the considers if the president of India, no uniform criterion, biased the behavior, the legislative council, governor, no discretion to nominate the members till the nominate the several times is given creation. Misuse of the direction, chancellor of the universities. Thank you very much. हेलो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यू जोर हेड बोलते हैं इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? डी फैक्टो हेड बोलते हैं इनको। द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आर्टिकल 74 to 75, 74 and 75 द प्रिंसिपल्स एंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट मिनिस्टर को क्या देखते हैं ये? हाँ, द गवर्नर ऑफ स्टेट बोलते हैं किसको? गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डी जोर हेड। जैसे प्रेसिडेंट को डी जोर हेड बोलते हैं, उसी तरह चीफ मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? डी फैक्टो हेड। द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये होते हैं। द आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 द प्रिंसिपल्स एंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। द टाइप्स ऑफ द मिनिस्टर, मिनिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं? मिनिस्टर 3 टाइप के, 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। पहला कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट और तीसरा डिप्टी मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर क्या होता है? एट द हेड ऑफ द ऑल 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। जी 3 टाइप का मिनिस्टर होते हैं, इन तीनों का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या होता है? मे और मे नॉट बी देयर, द नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। रीज़न फॉर पॉलिटिकल पर्पस, पॉलिटिकल पर्पस के लिए बना दिया जाता है कि सेटिस्फाइड टू द अदर पॉलिटिकल पार्टी हु द गिव द मेजोरिटी इन द लोकसभा या विधानसभा वाला जो सपोर्ट किए होते हैं उनको एज ए बना दिया जाता है। बस इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं हेड इंपॉर्टेंट ऑफ द हेड इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, मेंबर ऑफ द कैबिनेट के होते हैं, अटेंड ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग करते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये कैन वर्क अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर वर्क करेंगे, सर्विस एंड द गाइडेंस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर करेंगे। कैन बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्जेस भी होते, इंडिपेंडेंट चार्जेस भी होते हैं। कंट्रोल इंटायर मिनिस्टर करते हैं, डिस्चार्ज ड्यूटीज़ होती है। जूनियर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट, डू नॉट अटेंड एनी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। जो जूनियर मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं मीटिंग अटेंड नहीं करते, कैबिनेट मिनिस्टर अटेंड करते हैं। डिप्टी मिनिस्टर द नो इंडिपेंडेंस चार्ज ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वर्क अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट, डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग। जूनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ओनली एट द यूनियन लेवल पे होते हैं, नॉट नॉन पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट अपॉइंटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर, नॉट अपॉइंटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर, नॉट मिनिस्टर्स ऑफ द रियल सेंस, नो डिपार्टमेंट और मिनिस्टर allocated to them, assist ministers।
डिस्चार्ज ऑफ द पार्लियामेंट्री फंक्शन जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं इंक्लूड कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर रहते हैं। जो कैबिनेट होते हैं ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, नो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड नो डिप्टी मिनिस्टर। ठीक, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो वाइडर बॉडी होती है, डज नॉट मीट एट टेक डिसीजन एंड द फॉलोड द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट कलेक्टिवली। सॉरी, क्या है, सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, अब समझ में आया। जो सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है दी वाइडर बॉडी होती है, डोंट मीट एट टेक डिसीजन, फॉलो द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड विधानसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 74 एंड 75 फॉर द यूनियन एंड आर्टिकल्स 163 to 64 फॉर द स्टेट। सैलरी मेंशन इन द सैलरी एलोकेशन ऑफ द मिनिस्टर एक्ट 1952 फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द मिनिस्टर्स। डिफरेंट लॉ फॉर द मिनिस्टर और स्टेट लेवल। यूनियन लेवल का लॉ अलग होता है और स्टेट लेवल का अलग होता है, अलग अलग। द कैबिनेट मिनिस्टर होता है स्मॉलर बॉडी होती है, मीट किस लिए क्यों स्मॉलर, क्योंकि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर ही आते हैं। ठीक, मीट एट टेक ऑल मेजर डिसीजन, टेक्स ऑल मेजर डिसीजन, इंश्योर द कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। यूनियन कैबिनेट आर्टिकल 352, स्टेट कैबिनेट नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट कैबिनेट जो है इनके लिए मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेम होते हैं सैलरी और एलोकेशन होता है इनके लिए। जो एक्ट है 1952 वाला सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर एक्ट, उन्हीं से इनको सैलरी अलाउंस दिया जाता है किनको, कैबिनेट मिनिस्टर को। अब देखते हैं रोल ऑफ द मिनिस्टर। मिनिस्टर का क्या रोल है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है, मेक पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग अथॉरिटी, एडवाइजरी बॉडी भी है। यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है, स्टेट लेवल पर गवर्नर को एडवाइस करती है कौन? कैबिनेट मिनिस्टर। deals with all the executive and financial matter, proposal for the legislature, control appointment of the constitutional office, आराम से म्यूट स्टेट विल एंड द शिप ऑफ द स्टेट बोलते हैं। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट होता है। डोएल की स्टोन्स ऑफ द पॉलिटिकल आर्क, सर जॉन मार्सन द पाइवट ऑफ द पॉलिटिकल मशीनरी। The gold stone, solar orb around which the bodies revolve, breakers, the merchant policy। ये सब जॉनसन मार्थन है, इनका ये क्या क्या था? कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर इनका ओपिनियन था। पाइवोट ऑफ द पॉलिटिकल मशीनरी होता है। गोल्ड स्टोन का ओपिनियन क्या था? सोलर ऑर्ब अराउंड द विच द अदर बॉडीज, जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड ऑल बॉडी रिवॉल्व करती है, उसी तरह से कैबिनेट मिनिस्टर के अराउंड सारे मिनिस्टर रिवॉल्व करते हैं। इनका ये ओपिनियन था। बार्कर का मर्जेंट ऑफ द पॉलिसी, इनका ये ओपिनियन था। द बाग हॉट द हाइफन डेट बिलाइंड द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव टुगेदर। सर सर आइवर जेनिन का क्या होता है? कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। इनका ओपिनियन ये है कैबिनेट मिनिस्टर को लेके। एल.एस. एमरी का क्या है? सेंट्रल इन डायरेक्टिंग इंस्टीट्यूशन। कैबिनेट कमिटीज़ क्या होती है? डिफरेंट कमिटीज़ होते हैं। अनेबल टू फंक्शनिंग द कैबिनेट, नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट कमेटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। रोल ऑफ द बिजनेसेस क्रिएट बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रोवाइड फॉर द कैबिनेट मीटिंग्स। टू टाइप्स का होता है। स्टैंडिंग परमानेंट नेचर होता है। एड हॉक टाइप्स ऑफ द कैबिनेट कमेटी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला स्टैंडिंग परमानेंट नेचर का होता है। एड हॉक कमेटी जो होती है टेम्पररी कमेटी होती है, क्रिएटेड टू डील विथ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, डिसॉल्व द आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन
two tasks. To create the prime minister, to take the level of the chief minister, the number of the composition varies according to requirement, no fixed membership. Purpose क्या होता है? To discuss the matter, to take decision. कैबिनेट मिनिस्टर होता है पार्ट ऑफ इट। कैबिनेट कमेटी के जो कैबिनेट मिनिस्टर उनके पार्ट होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में भी इनवाइटेड कर देंगे या नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? जो कैबिनेट मिनिस्टर के हेड ऑफ द कमिटी होते हैं। इफ़ नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, अदर सीनियर मिनिस्टर वो हेड हो जाते हैं। डिसीजन ऑफ द कैबिनेट कमिटीज़ का क्या होता है? कैन बी रिवाइव्ड इंटायर कैबिनेट। टूल क्या होता है? रिड्यूस द वर्कलोड एंड कैबिनेट डिवीजन ऑफ द लेबर होती है। एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, मोस्ट पावरफुल, ऑल्सो नोन एज द सुप्रीम कमिटी। कमिटी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर, अपॉइंटमेंट बाय द कमिटी। पार्लियामेंट्री अफेयर, सिक्योरिटी, अकोमोडेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ग्रुप्स ऑफ द मिनिस्टर होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम द कैबिनेट कमिटी होती है। ग्रुप्स ऑफ द मिनिस्टर क्या होते हैं? इन सर्टेन केस टेक डिसीजन लेती है, अदर केसेस में रिकमेंडेशन देते हैं। कैबिनेट को इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन डिफरेंट मिनिस्टर से करती है। टेम्पर टेम्प्रोरी एंड एडहॉक होती है ग्रुप मिनिस्टर वाली होती है। सेकेंड राउंड टेबल, सेकेंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी जो आई थी ऑन द ग्रुप ऑफ द मिनिस्टर, लार्ज नंबर ऑफ द ग्रुप्स एंड डिलेज इन द मीटिंग एंड देन इनसफिशिएंसी मोर पावर्स ऑफ टू द ग्रुप टेक द डिसीजन। किचन कैबिनेट क्या होती है? नॉट मेंशन इन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट। जो किचन कैबिनेट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट नहीं है। द इनफॉर्मल बॉडी होती है, कंसेप्ट रिलेवेंट टू USA, इंडिया एंड UK। किचन कैबिनेट जो होती है स्मॉलर, पहला तो स्मॉलर देन द कैबिनेट, कैबिनेट से छोटा होता है। ऑल्सो नॉट जैसे इनर कैबिनेट भी बोलते हैं। किचन कैबिनेट कंप्रोमाइजेज ऑफ द कितने लोगों से बना होता है? प्राइम मिनिस्टर, इन्फ्लुएंसर, कॉलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली। प्राइम मिनिस्टर से होते हैं। एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंपॉर्टेंट मैटर के लिए प्लेस ऑफ द डिसीजन किचन कैबिनेट बिफोर कैबिनेट और डिस्कशन ऑन द अप्रूवल। बेनिफिट्स होती है स्मॉलर एंड इफिशियंट, मेंटेनिंग secrecy of the negative aspects, reduce and importance of the cabinet. प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर, आर्टिकल 74 प्राइम मिनिस्टर के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर कहलाए। एड एंड एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस बाइंडिंग ऑन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1798। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं पावर टू सेंड द बैक टू द एडवाइस ओनली वंस, एक ही बार में एडवाइस को बैक कर सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द काउंसिल। इफ द सेम एडवाइस सेंट बैक टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट बाउंडेड टू एक्सेप्ट कर लेंगे। एडवाइस टू गिवन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट रिक्वायर्ड द एनी कोर्ट कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप जो होती है। द even Rao versus Indira Gandhi 1971. Even after the dissolution of the Lok Sabha, the Council of Ministers and Prime Minister continued to hold the office, aid and advise the President of India. President can't be function without any constitutional minister. If President act without the advice, the constitutional and the dissolution of the Article 74. The Shamsher Singh versus Act of the Punjab, State of the Punjab 1974. Satisfaction of the President, not personal satisfaction of the union of the minister. Chief Minister and State Minister क्या होता है? Article 163. Council of Minister and Chief Minister at the head, aid and advise the governor को एडवाइस करते हैं। सेम प्रेसिडेंट के साथ जैसे होता है उसे गवर्नर के साथ। गवर्नर क्या होता है? एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस, वो एक एडवाइस के हिसाब से काम है, एक ही बार इनको दिया जाएगा। बट कैन बी डिस्क्रिशन वेदर द रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एनी क्वेश्चन if the matter under the discretion of the governor, decision of the governor, financial, the validity of the any time the anything done by the governor can't be the called the any question. Grounds of the should or should not have the counted his the
discrimination. Advice given to the Council of Ministers not inquired into any court confidential relationship. Shamsher Singh versus State of Punjab, 1974. In the areas governor required to the act is the discretion not bounded to by the advice of the council of minister. And other areas the governor bounded by the advice of the minister, the governor can't be act the personally. Satisfaction of the governor not personal satisfaction but the satisfaction of the council of ministers, the prime minister and the union minister. Article 75, the prime minister of India to be the appointment by the president of India, discretionary power of the president. Other minister appointment by the president, advice of the prime minister. Total number of the minister including prime minister 50% of the total membership of the Lok Sabha. 91st Constitutional Amendment Act 2003, the members of either house of the parliament disqualified the ground of the defection, the disqualification to be appointed by the minister. Also 91st Constitutional Amendment Act 2003, that till the end of the tenure of the head house or till the time of the consent of the election become a member again. Article 75, the ministers to hold the office pleasure of the president of India. Not fix the tenure, not fix the individual responsibility towards the president, the collective responsibility. Lok Sabha, not Rajya Sabha. Oath and officer secrecy, administered president of India. Third schedules the person can become the minister without being the member of the parliament. 6 months within the 6 month, the members of the either house of the parliament or Article 75, the salary allowance of the minister parliament by the law. The individual responsibility of the minister, Article 75, the minister can be removed by the president on the advice of the prime minister. Even the council of ministers support the majority of the Lok Sabha. No grounds are given to the constitution for the removal of the minister and advice of the prime minister. The prime minister given to the power of the removal of the minister to ensure the collective responsibility of the minister. Article 75, fundamental principle parliamentary form of the government is the collective responsibility of the minister towards the Lok Sabha lower house for the all action and decision taken by the minister, not towards the Rajya Sabha upper house. The collective responsibility sink and the swim together. No confidence motion is passed in the Lok Sabha. Entire council of ministers, including prime minister, goes to the including minister of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. No confidence motion never the introduced in the Lok Sabha. Collective responsibility, all the ministers of the council have the bounded by the decision of the council. Duty of the every minister support the decision of the council of ministers. Any minister against the decision of the council that resign the president to withdraws the pleasure of the advice of the prime minister. The legal responsibility and no legal responsibility of the minister in India and order to president and the county side by the minister. Courts no powers to inquire into the advice of given to the under minister of India, president of India. यूके में क्या होता है, एट द एवरी ऑर्डर ऑफ द क्राउन द कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर इफ ऑर्डर इज कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्टर टू बी हेल्ड द रिस्पॉन्सिबल कैन बी सेंट द कोर्ट. Chief Minister and State Minister. The Article 164, Chief Minister to be appointed by the Governor, discretionary power of the Governor, other Minister appointed by the Governor, advice of the Minister. Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha Minister for the tribal welfare, the may handle by the welfare, scheduled caste and the backward classes. Early Bihar also the part of the list executive 90 excluded by the 94th Constitutional Amendment Act 2006. Bihar no scheduled areas, very less population, scheduled tribes. The total members of the minister including chief minister at 50% of the total membership of the Vidhan Sabha. Minister under the minister 40 including chief minister and 91st
91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 लिमिटेशन किया गया 50% के लिए। मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द स्टेट ऑफ द लेजिस्लेचर डिस्कशनरी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन द डिसक्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड द मिनिस्टर ऑल्सो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 टिल द एंड ऑफ द टेन्योर द हाउस और द टिल द टाइम ऑफ द कंसेंट ऑफ द इलेक्शन एंड द बिकम द मेंबर्स ऑल्सो। जब डिजाइन करने के बाद हटाने के बाद भी होता है। Article 164 Minister hold the office to the pleasure of the governor, no fixed tenure, individual responsibility towards the governor, collective responsibility. Vidhan Sabha not Vidhan Parishad, the oath and the office of secrecy administered by the governor. Third schedule, add person become the minister without the being the member of the state legislature 6 months. Within the 6 month membership of the either house of the house of state legislature. Article 164 salary allowance of the minister state legislator by the law. Individual responsibility of the minister. Article 164 minister can be the removed by governor on the advice of the chief minister or even the council has the support the majority of the Vidhan Sabha. No grounds of the given to the constitution for removal of the minister on advice of the chief minister. Chief minister given to the power of the removal of the minister ensure the collective responsibility of the minister. Article 164 fundamental principle parliamentary form of the government. Collective responsibility of the minister towards the Vidhan Sabha and the early of the action or decision taken the ministers towards the Vidhan Parishad's upper house and the collective responsibility sink and swim together on the advice of the motion and to pass the Vidhan Sabha. The entire council of minister including chief minister goes to including minister from the Vidhan Sabha and the Vidhan Parishad. No confidence motion ever the introduced in Vidhan Parishad. Collective responsibility all minister of the council. The counts of decision making the council duty of the every minister support the decision of the council. Any minister against the decision of the council the resign the governor with all the pleasure of the advice of the chief ministers. Legal responsibility. No legal responsibility of the Ministry of India, any other governor, not a consistency for the minister. Court no power to the inquiry in the advice given to the minister or governor. Appointment of the prime minister 75. The prime minister appointment by the president of India, and the president of India are not free to appoint any person as a prime minister. Only the leaders of the majority party of the Lok Sabha, no party majority of the Lok Sabha. The President of India used the discretion appointment by the Prime Minister, the leader of the single largest party, followed by the floor test. The death of the Prime Minister in office, the advisor, successor, appointment as the President, obvious successor, appointment by the President. No use of the discretionary. No obvious successor. The President of India used the discretion to appoint the next Prime Minister. Constitution. The no requirement to prove the majority of the Prime Minister in the Lok Sabha before the entering in the office. Appointment as a Prime Minister. Again, approved majority. Within the limited time के लिए limited होता है. Any person not a member either the House of the Parliament can be appointed as a Prime Minister. कोई भी जो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वो मेंबर हो या ना हो फिर भी, बट 6 मंथ में उसको कोई भी विदिन 6 मंथ गेट मेंबरशिप ऑफ द अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हाउस की मेंबरशिप लेना पड़ेगा उसको 6 महीने के अंदर। द प्राइम मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। नॉट कंस्टिट्यूशनल लिमिटेशन कुछ नहीं है। एग्जाम्पल द इंदिरा गांधी देवेगौड़ा एंड द मनमोहन सिंह द मेंबर ऑफ द राज्यसभा व्हेन दे बिकम द प्राइम मिनिस्टर। द यूनाइटेड किंगडम यूके प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द कॉमन्स। कंपल्सरी कंडीशन होता है वो वहाँ के लिए, लेकिन हमारे यहाँ कोई कंडीशन है नहीं। The appointment of the function of minister. The union minister appointment by the president of India, not discretionary power. Discretionary power नहीं. Advice of the prime minister, union minister, member of the Lok Sabha or Rajya Sabha. If not a member of the either house, get membership of the either house or within the 6 months, and they can become the member and a member by the election or the nomination. Appointment of the chief minister. So the article
164. The Chief Minister appointed by the Governor and not free appointment anyone as the Chief Minister, only the leader of the majority party Vidhan Sabha and not party majority in the Vidhan Sabha. Governor use of the discretionary appointment as the Chief Minister's leader of the single largest party, followed by the floor test. The death of the Chief Minister in the office advice as a successor appointment by the governor. No use of the discrimination on the obvious successor. Governor use of the discretion to appoint the next chief minister. Constitution no requirement to the prove the majority of the chief minister of the Vidhan Sabha before entry in the office. Appointment as a chief minister when the prove the majority within the limited time. Any person not a member either the house of the state legislature can be appointed as a chief minister. Not 6 months. Within the 6 months, get the membership of the either house of the state legislature. Chief Minister can be a member of the Vidhan Sabha or Vidhan Parishad. No constitutional limitations. Sarkaria Commission on the Central-State Relation 1983 to 88. Recommendation with the regard to the appointment of the Chief Minister. Party of the Constitution having absolute majority called from the government and the governor no bias behavior. If the party clear-cut majority, governor should be follow this order. The budgets, the alliance, the form before the election. The largest party claiming for the government coalition before the after the election. Party claiming from the government with the support of the parties of outside. Chief Minister जो होते हैं from the party not having the majority floor of test. Appointment of the state minister होते हैं appointment by the governor, not discretionary power. Advice of the chief minister होते हैं state minister जो होते हैं member of the Vidhan Sabha and the Vidhan Parishad. If the not a member of the either the house to get membership either the house till 6 months can become the member of by any election nomination. Oath or the prime minister, oath of the minister and the मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर द टू ओथ होते हैं. पहला ओथ ऑफ द ऑफिस, दूसरा ओथ ऑफ द सीक्रेसी. द सेम फॉर द ऑल मिनिस्टर्स गिवन इन द थर्ड शेड्यूल. ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Oath of the office components: the true faith and the allegiance Constitution of India, the uphold the sovereignty and integrity of India, faithfully consistently discharge the duties of the office, and do right to all manner of the people in accordance with the Constitution and the law without fear, favor, offense, and the all will. Oath of secrecy: not discretionary or the directly communicates and not reveal any matter, and this is brought under the Constitution or become the known to him as the ministers. They accept the requirement and discharge of the duties. And the Deputy Prime Minister. The concept not mentioned in the Constitution. Any person taking the oath as a Deputy Prime Minister not constitutional valid. The Supreme Court, the discretionary or the person as a Deputy Prime Minister will not given the power of the Prime Minister. The person just like any other minister. Classification of minister. And the Minister of the State, Deputy Minister, Deputy Prime Minister, all the valid. Oath of the Chief Minister and the Minister. Chief Minister and the Minister, the two oath होता है. Oath of the office, oath of the secrecy, same for the all minister and the given to the short schedule. The oath of the Chief Minister and the ministers. They administered the governor. Oath of the office of component true faith in allegiance, Constitution of India, uphold the sovereignty and the integrity of India, faithfully constitutionally discharge the duty of the office, and do right to the all manner of the people in accordance with the Constitution, order to without fear, favor, effective or allegation. Oath of the secrecy: not directly and indirectly communicate, not reveal any matters that is brought under the consideration or become the known for him as the minister, except as a requirement discharge of the duties.
Deputy Chief Ministers. The concept not mentioned in the Constitution. Any person taking the oath and the not constitutional valid. The Supreme Court, the discretionary of the person as a deputy of the chief minister, will not given the power to the chief minister to the person, just like any other ministers. The classification of the minister of state, deputy minister, deputy chief minister, all the are valid. The term of the Prime Minister and the Minister. The term of the Prime Minister and Union Minister do not fix. Hold the office pleasure of the President of India. No, if it does not mean the President remove the Prime Minister, other minister at any time. Majority of the support of the Lok Sabha, Prime Minister and other minister can't be the removed. If a Prime Minister lost the support in the Lok Sabha, the President withdrew the measure. If the Prime Minister advised the President of India to remove the individual minister, the minister can remove. The term of the Chief Minister and the Minister. The term of the Chief Minister and the State Minister not fixed. The whole office pleasure of the Governor, nor it does not mean the Governor remove the Chief Minister and the other minister anytime. The majority of the support of the Vidhan Sabha, with the Chief Minister and the other minister can't be removed. S.R.F. Bomani vs. Union of India case 1994. If the Chief Minister lost the support of the Vidhan Sabha, Governor withdraw the pleasure. If Chief Minister advised the Governor to remove the individual minister, the minister can remove. Salary of the Prime Minister and the Minister. The salary and allowance of the Prime Minister and the Minister of Parliament by the law. The salary and the allowance of the Minister Act 1952. The salary is similar to the member of the Prime Minister. Fear accommodation allowance, travelling allowance, and medical facilities. Salary of the Chief Minister and Minister. Salary and allowance Chief Minister and other Minister. State legislatures by the law. Salary similar to the member of the state legislature. Free accommodation allowance, travelling allowance, and the medical facilities. The businesses of the Indian government. The Article 77. The all executive action government of the India taken the name of the president, other the instrument executive of the name of the president authenticated in the manner of the specific rules made by the president. In any other instrument authentication, all the not the valid when the question is a court of the law. Grant of this order is not passed by the president. The president of India make rule the convenient transaction of the businesses allocation among the ministers and all the businesses. And the businesses of the state government. The Article 166, the executive action, the government of the state taken the name of the governor, the orders of the instruments executed by the name of the governor authenticated in a manner specified the rule made by the governor. In any other instrument, authentication shall not be the called the question in the court of the law. The grounds this is order not passed by the governor. Governor make rules for the convenient transaction of the businesses, allocation among the minister of the businesses, and no allocation of the businesses minister without from the requirement action which is the discrimination. Duty of the Prime Minister. Article 78. Duty of the Prime Minister communicate to the President the allocation decision of the Council of Ministers administer plus proposal of the legislature function and information administration of the Union and proposal for the legislation as asked by the President. The duty of the Prime Minister and the required by the President to the submit the consideration of the Council of Ministers to matter of the decision taken by the single minister should be the considered by the entire Council.
The duty of the Chief Minister, Article 167. The duty of the Chief Minister communicate with the Governor that all decision of the Council of Ministers, administration and proposal of the legislation for information, administration of the state, proposal for the legislation. As asked by the Governor, the Deputy Chief Minister, and it required the Governor to submit the consideration of the Council of Ministers. A matter decision taken by the single magistrate and should be considered by the rights of the Union Minister. Article 88. The early minister, including Prime Minister, right to speak, right to take the part of the proceeding, either House of the Parliament, joint sitting in the committees of the Parliament, right to vote only that House that which they belong. If the take members of the House ever can be participate in the proceeding, no right to vote. The right to the state ministers. Article 177. Early minister, including chief minister, a right to speak, right to be part of the proceeding, either house of the state legislature, council of the state legislature, right to vote only in the house of to which they belong. If they are not a member of the house, they can be participate in the proceeding, no right to vote. Other parts of the function of the PM with respect to the Council of Ministers, allocation or place the portfolios of the minister, the ask the minister to resign, the president over the meeting of the cabinet. If Prime Minister resigns to dies of the office, entire council goes. If the minister resigns to or dies, the no impact on the council. The Prime Minister, advice of the President, the appointment of Attorney General, CAG, Chairman, Member of the UPSC, Election Commission, Finance Commission. With respect to the Parliament, the Prime Minister advises the President about the progress of the Parliament. Dissolution of the Lok Sabha, recommendation of the President, Chairman of the Niti Aayog, Inter-State Council, National Integration of the Council, National Water Resources Council, Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar, if the functionaries under the Constitution is to be recommended with the US President, and he is the Prime Minister, not a President of India. किसी को उसी का full length है. The Lord Morley, the Primus later pressed the first among the equal. The keystone of the cabinet, Herbert Marson का opinion क्या था? Primus later impressed. Sir William Harcourt का क्या है? Inter Space Loaning Minister known among the lesser state unions क्या था? Sun around us which the planets revolve. The keystone of the Constitution. And all the radios of the constitutional lead to the Prime Minister H.J. Lasky. The provide around the which the entire government machinery revolve. The central to the life of the cabinet. H.R.G. Gaurav. The government is the master of the country and the Prime Minister is the master of the government. The Monroe. The captain of the ship of the text arrangement model, the station of the straits wheel of the wheeler and the ship and the state, the parliamentary form of the government, also known as the prime minister, and from the government because of the significance of the prime minister, the other powers and the function of the CM. With respect to the Council of Ministers, allocation of the reversal portfolios, ministers also ask the minister to resign and preside over the meetings of the cabinet. If the chief minister resigns, dies in office, the entire council goes to the minister resign to dies and no impact on the overall of the council. If chief minister advises to the governor to appoint the advocate general, chairperson of the member of SPSC election commission or state finance commission with the respect to the legislature.
The chief minister advised governors among the propagation of state legislation resolution of Vidhan Sabha recommended to governor, chairman of the state planning board, vice chairman, general council by the rotation of the holding for the 1 years and the time the member of the entire state council, members of the governing council of the committee have discretionary power of the governor. That it use the power of the council of ministers in the capacity of the chief minister. The caretaker of the government. The Constitution of the India has no mention in the characters of the government. Arrange the necessary circumstances when the Lok Sabha is dissolved. And the creator among the creators, government creators, the general election, the new government, and the caretaker of the government in the term is invalid. Primary task for the creators government to the conduct the fair process. The council of ministers, the last confidence of the Lok Sabha, no government to the forward. The decisions over the task for the council of the continuous till now the arrangement is the made. The crackers of the government, the hold the office till the new arrangement is the made. The role of the crackers arms of the government and the meaning of the rotation task, no significant policy discussion. The no new scheme. Tarkudum Committee 1974 to 78 created government of the Sudan. The incredible salary announced by the new project upon the office of the council new policy and scheme breakdowns of government implementation accountability of the parliament is in this so not absolute the constitutional machinery for the electoral regimes. Thank you very much. लेजिस्लेचर द पार्लियामेंट द यूनियन लेवल पर क्या होता है यूनियन लेवल लेजिस्लेचर होता है इन इंडिया में द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है द पार्लियामेंट आर्टिकल 79 टू 122 पार्ट 5 में आता है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर वाला पार्ट स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे क्या होता है लेजिस्लेचर इंडिया बोथ द एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल 168 टू 212 है पार्ट 6 के अंदर आता है स्टेट लेजिस्लेचर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल 79 पार्लियामेंट 3 पार्ट में होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा अपर हाउस होता है काउंसिल ऑफ स्टेट होता है सेकंड चेंबर उसी को बोलते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स ये राज्यसभा का ये इतने सारे नाम है ठीक है रिप्रेजेंट्स किसको करते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा के जो अंदर तो लोकसभा क्या है लोअर हाउस इसका और एक नाम है हाउस ऑफ द पीपल इसका एक और नाम है फर्स्ट चेंबर इसका एक और नाम है पॉपुलर हाउस रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल जो लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं आर्टिकल 1954 द हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड लोकसभा एडॉप्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस एंड डज नॉट अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउसेस नहीं अटेंड कर सकते हैं एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट के होते हैं प्रेसिडेंट ऑल बिल पास बाय द लोकसभा एंड द राज्यसभा एसेट ऑफ द प्रेसिडेंट का चाहिए टू बिकम एन एक्ट बनाने के लिए एसेट चाहिए यूके में क्या होता है पार्लियामेंट 3 कंपोनेंट्स के बनते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस होती है हाउस ऑफ द कॉमन लोअर हाउस होता है क्राउन होता है ठीक पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर होता है यूएस में क्या होता है द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक होते हैं ऊपर नॉट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर कांग्रेस के नॉट पार्ट नहीं होते दूसरा यूएस में कांग्रेस होती है उसके बाद 2 हाउस होती है उसका सीनेट अपर हाउस होती है द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस होती है यूके एंड इंडिया सिमिलर होते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड क्राउन पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर होती है यूएसए में क्या होता है द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द पावर होता है द प्रेसिडेंट नॉट अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस के पार्ट नहीं होते प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स
लेजिस्लेचर इंडिया में क्या होता है, नो यूनिफॉर्मिटी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, सम स्टेट्स में यूनिकैमरल सिस्टम है, असम हैविंग ओनली वन हाउसेस विधानसभा होती है, लेकिन कुछ अदर में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी है, अदर हाउसेस में जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, इसमें टू हाउसेस होते हैं, विधानसभा होते हैं और विधान परिषद होते हैं। ऐसे 6 स्टेट है, पहला उत्तर प्रदेश है आपका, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अर्लियर था। जम्मू एंड कश्मीर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जब आया तो उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनी। यूनिक कैमरल यूनियन टेरेटरी यूनिक यूनियन के उसके पहले बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में, तो यूनिक कैमरल यूनियन टेरेटरी कर दिया गया इसको। तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश में लॉज लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, नॉट इन फोर्स टिल नाउ, द बोथ इन द स्टेट यूनिकैमरल है। द आर्टिकल 168 जो है स्टेट लेजिस्लेचर में, इन द सम स्टेट 2 कंपोनेंट्स होते हैं, गवर्नर एंड विधानसभा। इन द अदर स्टेट में 3 कंपोनेंट्स है, द गवर्नर, विधानसभा एंड विधान परिषद। विधान परिषद में क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, अपर हाउस होता है, सेकेंड चैम्बर होता है, हाउस ऑफ द एल्डर्स होता है। विधानसभा क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस एंड द फर्स्ट चैम्बर्स एंड द पॉपुलर हाउस। द एवोल्यूशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द विधान परिषद। आर्टिकल 169 द प्रोसेस टू बी द एबोलिश और क्रिएट विधान परिषद। विधानसभा दो कंसर्न द स्टेट passes द रेजोल्यूशन मेजोरिटी ऑफ द total membership of the house and majority of less than the 2/3 of the members present and voting and a special majority create abolish the vidhan parishad. After the passage resolution, role of the parliament power to create and abolish the vidhan parishad। लो सिंपल मेजोरिटी एंड बोथ हाउसेस में चाहिए। इन द सच लॉ द नॉट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 द इफ विधानसभा passes a resolution the parliament not bounded to the pass a law that discretion of the parliament। Article 169 a law passed by the parliament to create the creation or evolution of the Vidhan Parishad, the state not bounded to the implement it, example Tamil Nadu Legislative Council Act 2010 not implemented by the Tamil Nadu। The criticism of the Vidhan Parishad, not representative of the people, the delays in the legislative process, expenses, money, and the crimes consuming power to create a abolition of the Vidhan Parishad given to the Vidhan Sabha according to the financial strength needs। Composition of the Rajya Sabha, Article 80 the maximum membership of the 250, the indirectly elected 238 maximum indirectly elected state union territory nominated 12 members nominated by the President of India, total membership of the Rajya Sabha 245। स्टेट 225 एंड यूनियन टेरेटरी में 8 होते हैं, नॉमिनेटेड 12 मेंबर होते हैं। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ द सीट ऑफ द राज्यसभा, स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधान सभा, नॉट रोल ऑफ विधान परिषद, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफर वोट, नो सीक्रेट बैलेट। Allocation of the seats and the union territories। Criteria for population representatives of the states in the Rajya Sabha and different from the other state in the maximum representation Uttar Pradesh 31 members of the Rajya Sabha।
यूएसए में क्या है, अपर हाउस सीनेट्स होते हैं, फिक्स मेंबरशिप ऑफ द ईच स्टेट, टू फ्रॉम द ईच स्टेट, नो रोल ऑफ द पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज to be the determined by the parliament by the law of the parliament to be the elected by the elected member of the Vidhan Sabha, the proportional representation by the single transfer vote, no secret ballot, all union territories don't have the representation of the Rajya Sabha. The three union territories representation of the Rajya Sabha, Delhi, Jammu and Kashmir, Puducherry. Other union territories में population too small to be represent nominated members. 12 members. Nominated representation of India, advice for the Union Council of Ministers, special knowledge of the practical exercise, the lec- lecturer, art, social and services, science, logic में expertise in the expertise eminent people without going through the lengthy electoral process. यूएसए सीनेट से नो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं. कंपोजिशन ऑफ द विधान परिषद, आर्टिकल 171, इनडायरेक्टली इलेक्शन होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द विधान परिषद लिंक्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा, द वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट करती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 40 होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ द विधानसभा होती है, एक्चुअल नंबर जो होते हैं डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट्री लॉ से होती है, स्ट्रेंथ ऑफ विधान परिषद लेस देन द विधानसभा होती है, इंश्योर द डोमिनेशन ऑफ इलेक्टेड हाउस होती है, ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू करती है, फिफ्थ बाई 5/16 विधानसभा परिषद इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू किया जाता है. जैसे 1/3 इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं लोकल बॉडीज के आते हैं, म्यूनसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एट्सेट्रा. 1/12 इलेक्टेड जो होते हैं 3 years ग्रेजुएट रिसाइडिंग इन द स्टेट के करते हैं. 1/12 इलेक्टेड जो होते हैं टीचर्स ऑफ 3 years होते हैं, नॉट लोअर देन द सेकेंडरी स्कूल के होते हैं. 1/3 इलेक्टेड जो होते हैं बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द एमंग द पीपल हु आर नॉट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. 1/6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जो होते हैं एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, द स्पेशल नॉलेज इनके पास होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विसेज, साइंस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में ये पार्टिसिपेट किए रहते हैं. टेरेस्ट्रियल कंस्टिट्यूएंसीज फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शन में होता है टू बी क्रिएटेड इन द अकॉर्डेंस विथ द पार्लियामेंट्री लॉ होती है. कंपोजिशन ऑफ द विधान परिषद मेंशन इन द आर्टिकल 171, द नॉट फाइनल टू पार्लियामेंट. The power to be change the composition by the law and the simple majority and no amendment of the constitution. Article 368, composition of the Lok Sabha. आर्टिकल 81, द मैक्सिमम मेंबरशिप कितनी होती है 550. द स्टेट के पास 530 मैक्सिमम होती है, यूनियन टेरिटरी के पास 20 मैक्सिमम होती है, टोटल मेंबरशिप है 543. स्टेट के पास कितने हैं 524, यूनियन टेरिटरी के पास कितने हैं 19. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द लोकसभा में क्या है, द एमपीज के पास, एमपीज ऑफ द लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट के थ्रू आते हैं. टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी इलेक्शन होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांस के जो सिटीजन 18+ जो होते हैं, नॉट 18+ जो होते हैं एंड नॉट डिसक्वालीफाई अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन भी वोट कर सकते हैं. वोटिंग एज होती है अर्लियर 20 years था, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 18 साल कर दिया गया. कौन कॉन्स्टिट्यूशन 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू किया गया. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फॉर यूनियन टेरिटरी में टू बी इलेक्टेड एज अ मैनर ऑफ द डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट्री लॉ. यूनियन टेरिटरी का होता है डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965 में होता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी में इन लोकसभा में क्या होता है, चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन पीपल of the union territories.
The nominated members में क्या होता है, आर्टिकल 331 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा में होती है नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन एंड नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इज एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड एंड दैट टू द मोस्ट एट द मोस्ट ओरिजिनली क्या आता है नॉमिनेशन टिल द 1960 द एक्सटेंड फॉर द 10 years आफ्टर द एवरी 10 years द 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो आया सी इज द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लोकसभा एंग्लो इंडियन पर्सन जो थे फादर और एनी अदर मेल प्रोगेनेटर यूरोपियन डेसेंट के होते थे पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया एंड द बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंपोजिशन ऑफ विधानसभा आर्टिकल 170 द विधानसभा क्या है डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच के थ्रू करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है 500 मैक्सिमम स्ट्रेंथ 60 होती है मिनिमम स्ट्रेंथ 60 होती है स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा में क्या होता है वेरीज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट क्राइटेरिया फॉर पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है एक्सेप्शन में अरुणाचल प्रदेश सिक्किम गोवा मैक्सिमम स्ट्रेंथ 30 है मिजोरम में मिनिमम स्ट्रेंथ 40 है तो नागालैंड में मिनिमम स्ट्रेंथ 46 है एक्सेप्शन में सम मेंबर्स विधानसभा द सिक्किम नागालैंड इलेक्टेड इनडायरेक्टली द नॉमिनेटेड मेंबर में क्या होता है आर्टिकल 333 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंग्लो इंडियन कम्युनिटी विधानसभा एंड नॉमिनेटेड गवर्नर ऑफ द स्टेट इफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट ओनली वन Originally, nomination till the 1960, they extended for the 10 years after the every 10 years. The 4th Constitutional Amendment Act 2019 seized nomination Anglo-Indian community within Vidhan Sabha. Anglo-Indian person, father or any other male propagator, European descent person domicile of India born in the territory of India. सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ द लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा होता है स्टेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी सीट एलोकेटेड टू एवरी स्टेट रेशियो ऑफ द सीट इज द पॉपुलेशन सम ऑफ फॉर एवरी स्टेट रेशियो नॉट अप्लीकेबल स्टेट हैविंग द पॉपुलेशन लेस देन 6 million. The every state has the divided in territorial constituencies. The parameters of ratio population seats where that constituency sum of the all constituency uniformity क्या between the states between the constituency within the state population last seeding the census article 82 the adjournment after the each census after every census two changes to be made allocation of the seat in the Lok Sabha to state division of the state into territorial constituency to be done by the authority determined by the parliamentary law delimitation constitution commission act कब आया था 1952 1962 1972 2002 में आया 42 constitutional amendment Act 1976 आया जब the allocation of seat in the Lok Sabha to state division of the state into territorial constituency में किया गया है on the basis of the 1979 constitutional census till 2000 तक to be control the population 84th constitutional amendment act 2001 में जो आया to be ban readjustment extend to the till 2026 to be control the population data to be used in the 1971 census 87th constitutional amendment act 2003 में the allocation of seat in the Lok Sabha to state 1971 census division of the state into territorial constituency 2001 census changes in the name made on the basis of the first census after 2026 the adjustment basis on the least census
latest census not impact the existing Lok Sabha, not impact the existing Lok Sabha readjustment to the take place on the basis of the determined by the President advice of the Union Treaty of Manisha Article 330 representation of the state scheduled caste and the scheduled tribes in Lok Sabha, representation of the seats in the basis of the population, ratio of the seat reserved in the total seats, ratio of the population community in the total population, and no separation of the religious groups. Original constituency में a reservation till the 1960. The extent to the till now, the 104th Constitutional Amendment Act 2019 extend to the reservation till 30. And till the seat reserved for SC/ST community voters, the all communities in categories. Member of the SC/ST communities contest the unreserved general seats. Article 330. Reservation of the seat for the scheduled caste and the scheduled tribes in the Lok Sabha. Reservation of the seats in the basis of the population. Ratio of the seats in the reserve for the total seat and is equal to ratio of population community in the total population. No reservation and religious grounds originally constitution reservation till 1960. Extend to the till now 2004th Constitutional Amendment Act 2019 extend to the reservation till now 2000 seat reserved for SC/ST community voters, the all communities and categories. The member of SC/ST communities contest the unreserved general seats. 87th Constitutional Amendment Act 2003 may reserved seat for the fixed 2001 census data till the first census after 2026. The first passport system method of the election of the Lok Sabha. Every member of the Lok Sabha represents a territorial area and the constituency. Every constituency one members the single members of the constituency candidates winning the maximum voters winner. The first post systems that does not represent the entire electorate. The proportional representation of the system, all section representation of the in the proportion of the either members are different from the first post of the first past and the post. proportional रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम टू टाइप्स का होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लिस्ट सिस्टम इन इंडिया में क्या होता है, proportional रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का होते हैं, नॉट लिस्ट सिस्टम followed in India. Why the first past and the post of the Lok Sabha? The difficulty to understand the proportional representation system and the low literacy rate in the country में होते हैं. Proportional representation system क्या है? Representation of the large number of the parties, no majority to one party, instabilities. Problem to conduct by the election, reduce the significance of the individual candidates, the more the significance of the parties, reduce the contract between the voter and the candidate. System of the election in the Vidhan Sabha, direct election to the Vidhan Sabha, a state divided into the territorial constituency. Every state divided into territorial constituency, parameter ratio of the proportion of the seat that the constituency, same for the all constituency, uniformity of the representation across the constituency within the state. पॉपुलेशन द लास्ट प्रिसाइडिंग सेंसस क्या है, सेंसस में आता है आर्टिकल 170 द रीएडजस्टमेंट आफ्टर द ईच सेंसस एवरी आफ्टर एवरी सेंसस टू चेंजेस इन टू मेड एलोकेशन ऑफ द सीट इन विधानसभा एट स्टेट division of state into territorial constituency to be made by the authority and determined by the parliamentary laws. The Delimitation Commission Act 1952, 1962, 1972, 2002, 42nd Constitutional Amendment Act 1976.
आया जब, तो एलोकेशन ऑफ द सीट इन विधानसभा टू ए स्टेट, द डिवीजन ऑफ द स्टेट इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द basis of the 97th constitutional census till the 2000, the control the population, 84th constitutional amendment 2001 a ban on the readjustment extend to the till 2016 26 to control the population. The data to be is 1971 census. 87th Constitutional Amendment Act 2003 जो आया, एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द विधानसभा टू द स्टेट 1971 सेंसस, डिवीजन ऑफ द स्टेट इनटू टेरिटोरियल constituency 2001. The changes in the made to be been on the basis of the first census after 2026. A readjustment on the basis of the latest census, not impact on the existing Vidhan Sabha. A readjustment to the take place on the basis of the determined by the president and the advice of the Union Council of Ministers. Article 332. A reservation for the seat for the scheduled caste and the scheduled tribes in the Vidhan Sabha. A reservation for the seat in the basis of the population ratio of the seats in the reserve for the total seat is equal to ratio of the population of the community to the total the population. No reservation of the religious ground of the original constitution. Reservation till the 1916 extended till now. 104th Constitutional Amendment Act 2019 the extend to the reservation till to 2030. The seat reserved for SC/ST community. The voters, all the communities and categories, the member of SC/ST community contest the unreserved general seat. 87th Constitutional Amendment 2003 reserved seat in the fixed 2001 census data till the first census after the 2006 reservation temporary provision. Article 334 reservation for the seats in the special reservation. The sees after the certain periods, the reservation for the seat SC/ST in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha cases after 80 years 2030. The reservation for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and Vidhan Sabha sees after the 70 years 2020. Duration of the Rajya Sabha, Article 83. Rajya Sabha can't be dissolved by the president. Continuous chambers of the permanent bodies. One third member retired every 2 years. The member of the Rajya Sabha eligible for the re-election and the renunciation in any members of the time. The term of the office of the Rajya Sabha member of the 6 years not mentioned in the constitution, decided by the parliament by the law, and the representation of people act 1951. The Representation of the People Act 1951 empowered the President curtail the term of the member of the first Rajya Sabha 1952. A Representation of the People Act 1951 in the case of vacancy in the Rajya Sabha. Due to death, resignation, disqualification of the member. Person chosen to the till the vacancy hold the office of the mayor, hold the office a remainder of the tenure. The duration of the Lok Sabha. Article 83. The Lok Sabha can be dissolved, not a permanent house. Normal tenures. The 5 years from the data for the first meetings after the general election. The dissolve the automatically to end the 5 years. The president the power to the dissolve the Lok Sabha the before the 5 years. The advice of the Council of Ministers to this order is the disqualification can't be challenged in the court. Tenure of the Lok Sabha increase the national emergency. Article 352. The laws by the laws of the parliament 1 years at the time the any number of the times. The after the emergency ends, the Lok Sabha to the dissolve within the 6 months in the case of
Duration of the Vidhan Parishad. Article 172. Vidhan Parishad. Continuous house, the permanent house, and the can't be dissolved by the law by the governor. One third of the members are retired every 2 years, and the term of the every members the 6 years. The not mentioned in the constitution. Decided by the Parliament by the Law Representation of the People Act 1951. The members of the Vidhan Parishad eligible for the re-election on the renomination. Any members of the times. The Representation of the People Act 1951 in the case of the any vacancy in the Vidhan Parishad due to the death, resignation, disqualification of the member person chosen to the fill the vacancy holds the office of the remainder of the tenure. Article 172 Vidhan Sabha and can be dissolved. Not a permanent house. Normal tenures 5 years from of the death of the meetings after the general election. Dissolved automatically into the 5 years. Governor the power to dissolve the Vidhan Sabha the before the 5 years. Advice of the Council of Ministers in order to the dissolve the can't be the challenge in the court. Tenure of the Vidhan Sabha. In case the national emergency, Article 352. Laws of the Parliament 1 years of the time the any member of the time after the emergency in the Vidhan Sabha to be dissolved within the 6 months in the case of the extension. Qualification of the members of the parliament. Article 84 to be the member of the parliament citizen of India होते हैं. Subscribe to the oath the person of the authorized by the election of the commission. Components of the oath. True faith in the allegiance of the Constitution of India, uphold the sovereignty and integrity of India. Age limits: Rajya Sabha 30 years, Lok Sabha 25 years. Other qualification determined by the Parliament by law. The Representation of the People Act 1951 registered as an electoral and the parliamentary constituency. No, not necessary in the some constituency from the which the person is the contesting, both for the Rajya Sabha and Lok Sabha election. Candidate should be the registered as a voter. If he or she want to be contest the election for the MLAs, it is a mandatory to be registered as a voter at the list in one of the constituency anywhere in the state. If he or she is wants to be contest the election for the parliamentary members, she can be registered in the any state and the any contest from the any MPs of constituency in the and the country. The qualification for the membership of the state legislature. Article 173 to be the member of the state legislature, citizens of India subscribe to be the oath and the person of the authorized by the election commission. The components of the oath: the true faith in the allegiance to the Constitution of India, uphold the sovereignty and the integrity of India. Age limit: the Vidhan Parishad 30 years, Vidhan Sabha 25 years. Other qualification determined by the Parliament by the Law. Representation of People Act 1951. For election of Vidhan Parishad registered as an electoral as an assembly of the constitution within the state to be the nominated to the Vidhan Parishad. The resignation concerned the state election in the Vidhan Sabha registered at the vote in the any assembly constituency of within the state. And the disqualification for the membership of the parliament. Article 102 office of the profit under the union or the state minister of the union and the state, not the office of the profit. Any other office of the extent of the parliament, not a office of the profit. Unsound mind, the declared by the court, and the undischarged insolvent, not a citizen of India. In the voluntary acquired by the citizen of the foreign
the foreign country. The allegation to the foreign state disqualification by the parliament by the law. Disqualification under the 10th schedule anti-defection law. Additional disqualification criteria representation of the people act 1951. Not guilty for electoral offense. The corrupt the practices in election. Not convicted the imprisonment of the 2 years more. If the jail term for the 2 or the more years the disqualified, the preventive detention not be ground of the disqualification. Files of the election of the expenses within the time limit, not interest in the government and the contract and the sovereign, and no office of the profit in the corporation, the government of the 25% of the at least, the not dismissed from the government services, corruption or disloyalty, not convicted and the promoting the unity between the groups, and not convicted in the offense of the the bribery, not punished. The preaching the social crimes, untouchabilities, dowry, sati, Article 2103. Question the question whether the members of the parliament disqualified or not, all on the grounds of except disqualification on the grounds of defection. Decision of the president is the final होता है. Aid and advice election of Commission of India. Disqualification for member of the state legislature. Article 191. Office of the profit under the union or the state. Minister of the union or state, not office of the profit. Any other office exempted for the state legislature, not office of the profit. Unsound mind declared by the court. The undischarged insolvent, not a citizen of India, or violently acquired a citizen of the foreign country, allegiance to the foreign state. The disqualified by the parliament by the laws. The disqualification under the 10th schedule anti-defection law. Additional disqualification criteria representation of people act 1951. Not guilty for electoral offense of the corruption practices in election. Not convicted in the imprisonment of the 2 years or more. If the jail of the 2 or more years disqualified, the preventive detention not the ground of the disqualification. Files election of the expenses within the time limit, not interest in the government and the contract of the services of the office of the profit in corruption, government to 25 of the take the list. The not dismissed on the form the government services, corruption or the disloyalty, not convicted promoting the immunity between the groups, and not convicted the offense of the bribery, not punished the preaching of the social crimes, untouchabilities, dowry and sati. Article 192. The question whether the members of a state legislature disqualified or not on the grounds of except disqualification on the grounds of defection. The decision of the governor final. Aid and advice of the election commission of India. Anti-defection law 10th schedule, and the inserted by the 52 Constitutional Amendment Act 1985. Disqualification on the grounds of defection from the political parties and other parliamentary state legislature. Disqualification on the grounds of the defection. Members of the given of the membership of these parties the votes of against the obtained from the voting against the direction of the political party and without the obtained the prior permission of the party and accept within the 50 days. Independent members after the election of the joins of any political party. And nominated members can be joined the political party within the 6 month membership of the house. After that the disqualification on the grounds of the defection. No disqualification grounds of defection merge with the one party with another. Merge take place when 2/3 of members of legislative and the grounds emerge, and the two members of leave the membership of the party to presides over the houses to ensure impartiality.
earlier. The exemption from the defection, the split one third of the member of the legislative party, 91st Constitutional Amendment Act 2003, the exception of the split removed. In the case of the split members with the disqualified grounds of defection, the decision regarding the disqualification ground of defection presiding office of the House, no time limit within the decision taken the place. Quote, the Kyoto Holhan versus Jaluchiliu 1951. Presiding officer while the deciding cases of defection act as a tribunal. Quasi-judicial function. Presiding office for the House. Decision of the presiding officer subject to the judicial review. On the grounds of the male filed interaction, the political motivated decision, etc. The presiding officer has the power to make rules, the anti-defection under the then schedule. The rules for the replace the before the House of the for the 30, the power to the House of the appearance modify the reject rules, the violation of the rules and the similar to the breach of the privileges. Presiding presiding officer. Um, Case of the defection can be the taken up to the only the complaint registered by the member. The member against the whom defection case the file the charges of the here. The presiding officer the power to the refers to the case the committed the privileges. Any member of the parliament to the state legislature disqualified the anti-defection can't be the minister also, and the remainder of the tenure of the till the re-election and the legislation that can't be hold. The any remunerative political post, any office of the under the central the estate salary paid out of the public revenue. And the any office of wholly the partially the owned by the central and the state government and the salary paid by the such office. Vice voting. The members of the vote on orally. A yes or no. डिवीजन ऑफ द वोटिंग वोटिंग थ्री मेथड का होता है. पहला ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. यस यस ग्रीन, नो रेड और abstain येलो. सेकेंड यस और दोनों नोज स्लिप्स. थ्री द मेंबर्स गोइंग टू द lobby obviously outdated and no longer used. Secret ballot, the held by the automatic vote recording equipment. White LED in the all cases, and the physical counting in their phases में presiding officer जो होते हैं may ask the members to stand their place. खड़ा हो जाइए वहीं पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलेंगे, अकाउंटिंग हो जाएगी. एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू काउंट देम द नंबर. यूजुअली द वोट वाइस नोटिस क्या होता है, इफ द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिसर चैलेंज डिवीजन ऑफ द वोटिंग टेक प्लेस. ऐसे होता है. लेजिस्लेचर प्रोसीजर. द गवर्नमेंट बिल वर्सेस प्राइवेट मेंबर्स बिल. द गवर्नमेंट बिल क्या होता है, इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर. प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, इंट्रोड्यूस बाय द मेंबर एंड अदर मिनिस्टर. गवर्नमेंट बिल रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी. प्राइवेट मेंबर बिल रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड्स फॉर द मेंबर. गवर्नमेंट बिल क्या होता है, ग्रेटर चांस टू बी पास्ड. प्राइवेट मेंबर बिल लिमिटेड चांस टू पास. Government bill rejection in the Lok Sabha may be seen as the lack of the confidence in the government. Private member bill rejection no impact over the members of the government. गवर्नमेंट बिल क्या होता है, 7 days एडवांस नोटिस दिया जाता है गवर्नमेंट बिल में. प्राइवेट में नो 1 month एडवांस नोटिस दिया जाता है. गवर्नमेंट बिल ड्राफ्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट मेंबर बिल ड्राफ्टेड बाय द मेंबर. Government bill can introduce a money bill. Private member bill can't be introduced as a money bill. Questions लास्ट में देखेंगे. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ द बिल्स. बेसिस प्रोसीजर
uh, required for their the passage. A bill can be classified the ordinary bill, matters other than the financial matter, the money bill, the financial matters, taxation, expenditure, and public debt. The financial bill, the financial matter other than the money bill matters. The Constitution Amendment Bill, amending the provision Constitution, a drafted process that passes the different bills. Ordinary bills. Article 107. The ordinary bill originate either the House of Lok Sabha or Rajya Sabha, to be passed a simple majority of both houses. Propagation, no lapses of the bill. Ordinary bill can be introduced either the minister or the private members. Notice to introduce the bill. The first reading, the introduced publication in the Gazette. A bill introduced with the objective no discussion on the bill. The published in the Gazette of India. Exception if the published the if the publish the gazette before the introduction, no need to introduce the bill in the house, done by the speaker on the request to the members. Second bills reading, the executing stage of the bill, the final shape given to the bill. Second reading, थर्ड सब स्टेज. पहला जनरल डिस्कशन होता है, कॉपीज ऑफ द बिल गिवन टू द मेंबर्स. The general discussion provision of the bill not be detailed discussion. After general discussion, uh, it can be the referred to the parliamentary committees selected or the joint committee or the public for the members, or taken up the precedence and the presidency of the house. Second committee stage, if refers to the committee, clauses by clauses analyzed, send report back to the house. Second stage. A third categorization of state, after the receiving the reports and the committee, if he is considered by the house, the clause by the clause. Each clause discuss on the voted upon the proposal of the amendments. Third reading, the final acceptance or the rejection of the bill. Simple majority to the pass the bill. If the pass transmitted second house, bill will be the second house. The first reading होता है, second reading होता है, third reading होता है. Fourth alternatives में pass the bill to sent by the first house without the amendments. The sent to the president for the asset. The pass the bill with the amendment sent to the first house में दिया the if the first house the accept the amendment bill, and second sent to the president. If the first house reject the amendment bill, deadlock होता है. The reject the bill, deadlock में the keep the bill pending, and the no action for the 6 month deadlock. While the calculating 6 month, if the house adjourns or propagate more than the 4 month consecutive days are not counted. In the case of the deadlock, joint sitting of the both houses, at the joint sitting bill, a bill to be the pass a simple majority. After the bill is the pass both the houses or at the joint sitting, sent to the president for the asset. Article 111. After the asset of the consent, bill will become the act. A joint sitting. Article 108. Mechanism. The resolve the deadlock between the Lok Sabha and Rajya Sabha. Power of the President, joint sitting, the applicable only the ordinary bills and the finance bills, and not possible money bills and the constitutional amendments bill, not joint sitting. If the bills pass the dissolution of the Lok Sabha, joint sitting possible. The Lok Sabha dissolve after the notification of the President of India summing the joint sittings. Bill not be passed in this case. Once a joint sitting in um, summoned,
None of the house pass with the bill individually. Speaker of the Lok Sabha presides over the joint sitting. स्पीकर absent रहेंगे तो डिप्टी स्पीकर लोकसभा प्रिसाइड करेंगे. डिप्टी स्पीकर ऑल्सो absent तो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा प्रिसाइड करेंगे. डिप्टी चेयरमैन ऑल्सो absent the member of the president deciding among themselves the presiding officer. quorum क्या होता है? 1/10 of the total membership माइनस लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा और राज्यसभा होने. ज्वाइंट सीटिंग में क्या होता है? द गवर्नड बाय द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ लोकसभा. बिल ज्वाइंट सीटिंग में क्या होता है? पास्ट सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट एंड वोटिंग. एट ज्वाइंट सीटिंग नो न्यू अमेंडमेंट टू द बिल. द एक्सेप्शन में क्या होगा? फर्स्ट अमेंडमेंट द कॉज बाय द डेडलॉक बिटवीन हाउस. सेकेंड अमेंडमेंट नेसेसरी ड्यू टू द डेलीज in the bill. Three bill in passed in joint sitting. Dowry Prohibition Bill 1960. Banking Service Commission Repeal Bill 1977. Prevention of Trade Bill 2002. The Ordinary Bill State Legislature. Article 196. Ordinary Bill originate either the Vidhan Sabha or the Vidhan Parishad. To be passed a simple majority of the both houses. Propagation no lapses of the bill. Ordinary bill can be introduced either the minister or the private member. Notice to introduce the bill. First reading introduced plus the publication of the Gazette. Bill introduced with the title Objective to Discussion on the Bill. Published in the Gazette of the State. Second reading. A security stage of the bill. Final shape given to the bill. सेकेंड रीडिंग थ्री सब स्टेज. पहला जनरल डिस्कशन में होता है. कॉपीज ऑफ द बिल गिवन टू द ऑल मेंबर्स. जनरल डिस्कशन प्रोविजन ऑफ द बिल नॉट डिटेल इन डिस्कशन. आफ्टर जनरल डिस्कशन इट कैन बी रेफर्ड टू द कमिटी. सेकेंड टू कमिटीज स्टेट इफ रेफर्ड टू द कमिटी क्लोज बाय द क्लोज एनालिसिस एंड रिपोर्ट लेक बैक टू द हाउस. सेकेंड स्टेज में क्या होता है? थ्री कंसिडरेशन स्टेज. आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट फ्रॉम द कमिटी if any consideration of the house closed by the clause each clause discussed and voted upon proportional of the amendment. थर्ड रीडिंग में क्या होता है? फाइनल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल. सिंपल मेजोरिटी टू बी पास द बिल इफ द पास ट्रांसमिटेड सेकेंड हाउस. सेकेंड स्टेज में क्या होता है? बिल पास. सेकेंड थर्ड स्टेज ऑफ द बिल ओरिजिनेटेड द पासिंग द विधान सभा सेंड टू द विधान परिषद. विधान परिषद में क्या 4 ओपिनियन होता है. या तो पास करेगा, पास होगा, पास विथ द अमेंडमेंट सेंड बैक टू द असेंबली, रिजेक्ट द बिल, नो एक्शन ऑन द बिल 3 month टाइम पीरियड. इफ द अमेंडमेंट एक्सेप्ट द विधान सभा to send the Vidhan Parishad, bill sent to the governor or asset. In the three case Vidhan Sabha power to Vidhan Parishad. Article 197. If Vidhan Sabha reject the amendments and proposal of a Vidhan Parishad. If Vidhan Parishad reject the bill, the Vidhan Parishad no action on the bill 3 months. In the three cases, the Vidhan Sabha pass the bill again, sent to the Vidhan Parishad 3 action. Reject the bill, pass the bill with amendment, not acceptable to the Vidhan Sabha, no action on the bill 1 month. Bill deemed to be the pass. Bill originate in the pass the Vidhan Parishad sent to the Vidhan Sabha. If rejected the Vidhan Sabha. The death of the bill. Unlimited power of the passing a bill. विधान सभा में क्या होता है? विधान परिषद only delay by the bill
total by the 4 month and 3 month during the first passes and second month during the second passes can't be stopped the bill. Constitution no mechanism joint sitting at the state level to resolve the deadlock. The Vidhan Parishad where the Rajya Sabha. Money bill, Article 110, the definition of the money bill. A money bill, if it only contains the all or any of the provisions, the imposition, abolition, remission, alternation, regulation, or taxes, regulate the borrowing of the money, union government, and the custody of the Consolidated Fund of India, Constituency Fund of India, payments into withdrawal of the money from these funds. The appropriation, the Consolidated Fund of India declaring the any expenditure charged Consolidated Fund of India or the increasing the amount of any such expenditure. A receipt of the money Consolidated Fund of India or the public account custody of the such account audit accounts any union or state. A bill is not a money bill just because of the provides for the imposition of the fines or penalty, demand for the payment or the fees or license or any such services, imposition, abolition, remission, alternation, regulation, tax imposed by the local authority. Question if the bill is a money bill or not. The discussion of the Lok Sabha is the final होता है. Sorry, decision of the speaker money bill will be can't be the question court of law. A money bill is transmitted to Rajya Sabha, sent to the president. Certificate of the speaker of the Lok Sabha bill is a money bill. Article 109 special procedure money bill. प्रोसीजर में क्या होता है? मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, इंट्रोड्यूस recommendation of the President of India, pass the Lok Sabha, transmitted and reject not Rajya Sabha. राज्य सभा में क्या होता है? लिमिटेड पावर इन द केस ऑफ मनी बिल, कांट रिजेक्ट और अमेंड. राज्यसभा क्या होता है? रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन द 14 days विथ द विदाउट कंसेंट या रिकमेंडेशन. If the Lok Sabha may or may not accept the recommendation of the Rajya Sabha, if the Rajya Sabha no action within 14 days, bill is deemed to have been the passed by the Rajya Sabha. And Lok Sabha में क्या होता है? More power in the case of the money bill than the Rajya Sabha when their money bill. The president the precedented the presented President of India given the asset to the bill. No suspension veto of on the bill. Can withdraw the asset if the recommended the Union Council of Minister. Ordinary bill or says money bill. Ordinary bill can be introduced Lok Sabha or Rajya Sabha. Money bill क्या होता है? Introduced only in the Lok Sabha. Ordinary bill introduced minister or private member. Money bill only introduced by the minister. The ordinary bill no recommendation President of India. मनी बिल में प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा अमेंड और रिजेक्ट. मनी बिल राज्यसभा ओनली रिकमेंडेशन विद इन 14 days. Ordinary bill, any house no action on the bill within the 6 month. मनी बिल में क्या होता है? राज्यसभा टेक एक्शन इन 40 days. ऑर्डिनरी बिल नो सर्टिफिकेट ऑफ स्पीकर. और मनी बिल में क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर होता है. ऑर्डिनरी बिल डेडलॉक ज्वाइंट सीटिंग होती है. मनी बिल में नो डेडलॉक पॉसिबल होता है. एंड ऑर्डिनरी बिल डिफीट इन द लोकसभा में लीड टू द फेल ऑफ द गवर्नमेंट इफ द गवर्नमेंट्स बिल. मनी बिल में क्या होता है? डिफीट इन द लोकसभा, फॉल ऑफ द गवर्नमेंट. ऑर्डिनरी बिल में अप्रूव्ड, रिजेक्ट और सेंड बैक टू द प्रेसिडेंट.
मनी बिल में क्या अप्रूव्ड रिजेक्ट और रिजेक्ट अप्रूव्ड रिजेक्टेड एंड प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी बिल सेंड टू द प्रेसिडेंट व्हेन द पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस। मनी बिल में क्या होता है सेंड टू द प्रेसिडेंट इवन द नो एक्शन बाय द राज्यसभा। Money bill in the state legislation. Article 199 definition of the money bill. A bill, money bill, if it only the contains the all or any of the position imposition evolution remission alternation regulation or tax के लिए हो। The regulate the borrowing of the money state government and the custody में consolidated fund of state contingency fund of state payment into or the withdrawal of the money from the this fund the appropriation consolidated fund of state and declaring any such expenditure charge and consolidated fund of state or increasing amount of any such expenditure receipts of the money consolidated fund of state or the bill or the public account of state custody of the such accounts. A bill not a money bill or just a because of its provides for the imposition or the fines or penalty demand for the payment and fees or the license or any such service imposition evolution remission alternation regulation no tax imposed by the local authority. A question if the bill is a money bill or not, the decision or the Vidhan Sabha speaker is the final. A decision of speaker money bill can't be questioned court of law. The money bill is transmitted to the Vidhan Parishad sent to the governor. Certificate of the speaker or the Vidhan Sabha bill is a money bill. Money bill में क्या होता है can be introduced only in the by a minister. आर्टिकल 198 स्पेशल इंट्रोड्यूस ऑफ द मनी बिल प्रोसीजर में क्या होता है प्रोसीजर स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल प्रोसीजर मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली इन विधानसभा इंट्रोड्यूस रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर ऑफ स्टेट द पास द विधानसभा में ट्रांसमिटेड नो विधान परिषद में होता है ट्रांसमिट विधान परिषद to limited power in the case of the money bill can't be reject or amend. The Vidhan Parishad may return the bill to be Vidhan Sabha and within the 40 days without recommendation. The Vidhan Sabha may or may not accept the recommendation of the Vidhan Parishad. If the Vidhan Parishad no action within the 40 days, a bill deemed to have been the passed by the Vidhan परिषद विधानसभा में क्या होता है मोर पावर इन द केस ऑफ द मनी बिल देन द विधान परिषद व्हेन द मनी बिल प्रेजेंटेड द गवर्नर गिव टू द बिल नो सस्पेंशन वीटो ऑन द मनी बिल can withhold asset or recommended the state council of minister keep the bill consideration of the president financial bill the financial bill में क्या होता है bill is dealing with the financial matter revenue or expenditure three kinds of the financial bill money bill article 110 financial bill type 1 article 117 financial bill type 2 article 117 all money bill are the financial bill all financial bill not a money bill only those financial money bill containing the matter matters all or any other matters article 110 financial bill 1 article 117 contains the matter in article 110 other matters of the general legislation the financial bill first introduced only the Lok Sabha prior recommendation of the President of India can be rejected or the amended by the Rajya Sabha. To be moved amendment in the tax financial matter prior approval of the president no required. On the other hand,
प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड होता है। तो ज्वाइंट सीटिंग में इन द केस ऑफ द डेडलॉक पॉसिबल। अब्सेंट ऑफ द परसेंट, एसेंट ऑफ द परसेंट में क्या होता है, एसेंट विड्रॉल एंड द सस्पेंसिव वीटो। द फाइनेंशियल बिल सेकेंड में क्या होता है, आर्टिकल 117 कंटेन द प्रोविजन एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड द एनी मैटर लिस्टेड इन आर्टिकल 110। सेम प्रोसेस में क्या होता है एज ऑर्डरली बिल। इंट्रोड्यूस आइदर द हाउस लोकसभा और द राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल होता है। स्पेशल फीचर में क्या होता है, बिफोर द पासिंग द बिल ऑफ इन द हाउस द president recommends the houses of considered of the bill। asset of the president में क्या give asset, withdrawal the asset, suspensive veto लगा सकते हैं। अमेंडमेंट प्रोसेस 3 टाइप का होता है। पहला, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। Amendment by the simple majority. Certain provisions of the constitution can be amended. Simple majority, both houses of the parliament can change the not the amendment and not amend not deemed to be amended or under the article 368 आ जाता है। The admission or the establishment of the new state, a formation of the new state, changing the boundaries or the name of the abolition, certain legislative council, second schedule, quorum of the parliament, use of the English parliament, number of the judges of Supreme Court, widening the jurisdiction of the Supreme Court, official language, citizen provisions, delimitation of the constitution, union treaty provision of the 5th and 6th section, constitution amendment bill। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट प्रोसेस में क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नॉट एज फ्लेक्सिबल यूके, नॉट एज रिजिड यूएसए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ब्लेंड द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बोथ है, रिजिडिटी भी है फ्लेक्सिबिलिटी भी है। पार्ट 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, एडिशन, वेरिएशन और रिपील। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स शुड नॉट बी अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट प्रोसीजर कैसा क्या है, बिल टू बी द अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस either the house of parliament, राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी है। Either the Lok Sabha or Rajya Sabha can't be the introduced state legislature can't be the introduced by the minister or the private members. No prior permission for the president required। Constitutional amendment bill had to be passed both the houses majority of the total membership plus majority not less than 2/3 of the member present and voting। To be passed each houses separately, and no joint sitting possible in the case of the disagreement. If the federal provision are to be amended, a bill passed by both the houses of the parliament and ratification by the less than 50% of the state by the simple majority। No time limited for the states to given the consent of the bill। बिल क्या होता है, sent to the president after the entire process। 24th Constitutional Amendment Act 1971 obligatory for the president given assent for the bill, uh, can't withdraw the bill or the send back to the reconsideration। The rules and procedure of the parliament, a special majority not only during the voting but during the other stage the bill also। the federal provision में होता है required the ratification of the state election of the president and the manner of the election extend to the executive power union or state
The Supreme Court or High Court, the distribution of the legislative power between the center and state. The GST Council added a 101st Constitutional Amendment Act 2016 listed 7 schedule representation of the state parliament amendmenting process. Criticism of the amendment procedure. No provision for the Constitutional Assembly to amend the Constitution. USA a special body constitutional convention. The state legislature to obey the invited amendment. USA Constitutional Convention. To be called the petition two-third of the state. Rules of the states in amendment. The too few cases. The only half of the states USA consent three-third of the state required. Constitution क्या कहता है? No time limit for the state to ratify the amendment and no provision for the joint sitting in the case of the deadlock. Amendment procedures. The strikes a balance between the rigidity or the flexibility. Pandit Jawaharlal Nehru. There is a per, per, permanence on in the constitution. If you can make the constitution rigid, you will stop the nation and the growth. The B.R. Ambedkar क्या कहते हैं? Constitution is not final, inflexible, and you can, and KC whereas the variety of the amendment process wide but the rarely found. The Gravenil Austin क्या कहते हैं? अमेंडमेंट प्रोसेस जो होता है मस्ट एबल द कन्विंस द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन appear the complications but the delivers. बजट प्रोसीजर क्या है? आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हाट बजट नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस्टिमेट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट अर्ली फाइनेंशियल ईयर lay the report before the both houses of the parliament. Only one budget. No separate railway budget in India. Discontinue from 2017 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था. रेलवे बजट इंट्रोड्यूस सेपरेटली 1924 टू अनवर्ड एक्वर्थ कमेटी रिपोर्ट के थ्रू लाया गया था. एक्सपेंडिचर ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू टाइप्स का होता है. एक्सपेंडिचर charge upon consolidated fund of India. The expenditure proposed to be made the consolidated fund of India expenditure annual financial statement article 112 and the so they separately the revenue expenditure and other expenditure. Charge expenditure consolidated fund of India no subject to veto or the parliament. No approval of the parliament required. Can only be discussed. Parliament can't be rejected them. The list of the charge expenditure article 112. The emoluments and the allowance of the President of India oath or the expense. The salary and the allowance chairman, deputy chairman, speaker and deputy speaker. Salary allowance pensions Supreme Court judges CAG and plus the member of the UPSC. The list of the charge expenditure article 12. Salary allowance pension Supreme Court judges. List of the charge expenditure article 12. Administrative expenses Supreme Court CAG UPSC. Pension of the High Courts.
Debt charges, liabilities, government of India including the interest payment, raising and the s- the servicing of the loan, the amount of the money, a satisfied judgment, decrease, order, award, tribunal, any other expenditure की बात करते थे, declare by the parliament by the law, charges, expenditure. थ्री सिक्स stages of the budget process. पहला, the presentation, the presented the financial finance minister in Lok Sabha में, and no discussion on the day of the presentation. Can be presented the multiple parts after the budget speech. The budget documents led before the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Second, general discussion. The discussion aspects of the budget, both the houses of the parliament, discussion over the principles and needs for the money. At this stage, the no voting on the budget. Third, the scrutiny by the departmental committees. 24th departmental standing committees scrutinize the budget and they analyze the demand for grant concerned ministers and department. Reports of the committees submitted both the houses of the parliament. Fourth, demand for the grants, article 113. The charges expenditure not subject to the vote the parliament, and the charge expenditure can be discussed Lok Sabha and Rajya Sabha. Proposed expenditure submitted Lok Sabha in the term of the demand for grants, and the Lok Sabha the power to accept, reject, modify or demand for grants. The Rajya Sabha only discuss the proposed expenditure on the voting allowed. Demand for the grant not available, not avoid the Rajya Sabha. Demand for the grant tabled the लोक सभा, प्रायर रिकमेंडेशन द प्रेसिडेंट. डिमांड फॉर ग्रांट की बात करते हैं, प्रेजेंटेड मिनिस्टर वाइज, ईच डिमांड वोटेड सेपरेटली. बिफोर द वोटिंग Before the voting, detailed discussion each demand to the reduce the money allowed any ministers. Three types of the cut motion only Lok Sabha as the policy cut motion. Disapproval policy underlying the expenditure, reduce the money and the rupee one. The purpose to the alternate policy. Second, to reduce the money allowed the any ministry. B, economic cut motion. The purpose the expenditure impact the money, reduce the amount allowed. Cut Token cut motion, a way to express the grievances of the members towards the government. The symbolically reduce the demanded by the rupees 100. The uh, conditions for the cut motion related to one demand only. No defamatory systems, no suggestions, the amendment or repeal by the laws, should not be the raise the matter not under the union government, should not raise the matter charge expenditure, should not the raise matter sub judice, no question of the privileges. Significance of the cut motion. The initiate detailed discussion speech of the demand, the accountability of the government cut motion, the usually the not passed the majority of the government Lok Sabha, if the past may reflect the lack of the confidence government and the may raise. Fifth, the appropriation bill and article 114. After the demand for the grant passed by the Lok Sabha, article 113, to withdraw the money consolidated fund of India. The appropriation bill needs for to be the passed. The appropriation bill to contain demand for grant, charge expenditure, no money can be withdrawn the consolidated fund of India except through the appropriation bill. The government can withdraw the money consolidated fund of India only after the passage of appropriation bill. Kind of the money bill. The no amount can be the purpose the appropriation bill. To be changed the amount any demand for grant, change amount charge expenditure. Charge expenditure. To change the
Destination any funds. Supplementary grant article 115. The grants for the fund, if the funds already granted the insufficient precedent caused to be the lead, both the houses parliament received uh, revise the statement of the expenditure appropriation bill to be passed to withdraw the money. The additional grants article 115, money new services not estimate the annual finance statement precedent the president caused to be laid before led. Both houses parliament receive a statement of expenditure appropriation bill to be passed with all the money. The excess grant article 115, money spent on the services in excess money money originally granted by the Lok Sabha demand for the excess grant precedent caused to be led. Both the houses parliament revised the statement of the expenditure appropriation bill to be passed to withdraw the money before the presenting demand for the excess grant approval. The public account committee vote of the credit article 116 granted by the Lok Sabha meet demand for the services unexpected or undefined magnitudes. Demand demand can't be the stated declarely. Banks check given by the Lok Sabha to be the government pass appropriation bill of the withdrawal of the money. Exceptional grant article 116, any special purpose not mentioned in the annual financial statement pass appropriation bill for the withdrawal of the money. Token grant, a grant given by the Lok Sabha to transfer fund from the expenditure head to the another. Reappropriation of fund, no additional expenditure. Consolidated Fund of India. Sixth, finance bill. A bill introduced to give an effect all the financial taxation proposal amendments can be made. Unlike the appropriation bill, money bill, provincial collection of the tax act 1931, financial bill to be the enacted within the 75 days. Budget process at state level. Article 205, supplementary additional access grant. Article 206, vote on the account, vote for credit exceptional grant. Types of the fund. Three kinds of fund. Central government, Consolidated Fund of India. Article 266, the incoming money in Consolidated Fund of India. The all taxes and revenue Government of India. All loans raised. Repayment of the loan received. All expenditure Government of India. Consolidated Fund of India. No money withdrawal appropriation bill. Public Accounts of India Article 266, all money except money credit to the Consolidated Fund of India public accounts. Example, appropriate fund deposit with judicial deposit, a small saving act. The money public accounts can be withdrawn. The without approval Parliament of India, no appropriation bill required. Contingency Fund of India Article 267, money paid by the Parliament by the law time to time. The Contingency Fund of India in Fund of India Act 1950, fund disposal President of India headed by the Finance Secretary behalf of the President of India, use meet in unforeseen circumstances. Authorization Parliament of India, a regulation of the finance businesses. Article 119, the power of the Parliament make rules the financial businesses if
against the rules of the procedure, the financial rules will be prevail. Purpose the timely and the smooth and the completion finance businesses. The position of the Rajya Sabha equal to the Lok Sabha. Ordinarily Bill, Constitution Amendment Bill, the Financial Bill, Article 117. The approval ordinances, election and the impeachment. President of India, election Vice President of India in removal. Rajya Sabha has the greater power removal. The Supreme Court and High Court judges, Chief Election Commissioner CAG अप्रूवल किसके थ्रू मिलता है? Emergencies in three types. The ministers, that can be from the Lok Sabha or Rajya Sabha. Reports for the constitutional body submitted to the both houses में. The Finance Commission CAG UPSC, increasing the jurisdiction Supreme Court and UPSC. राज्य सभा अनइक्वल स्टेटस एंड लोकसभा. मनी बिल को लेके इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा. राज्यसभा कांट अमेंड और मॉडिफाई और रिजेक्ट. रिकमेंडेशन गिवन टू द राज्यसभा, नॉट बाइंडिंग ऑन लोकसभा. फाइनेंशियल बिल 1, द इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द लोकसभा. ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड लोकसभा. रूल्स ऑफ द प्रोसीजर लोकसभा के पास है. The proposal for the legislation. Lok Sabha has its say the greater strength. राज्य सभा के पास no power to vote demand for grant. Resolution में discontinuance of the national emergency है. Passed only लोक सभा नॉट राज्यसभा में होता है. नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ओनली लोकसभा के पास होता है, नॉट राज्यसभा के पास होता है, नहीं होता है. वीक एरियाज की बात करें तो फाइनेंशियल मैटर में कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. स्पेशल पावर्स राज्यसभा के पास क्या है? 6 एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा. ऑथोराइज द पार्लियामेंट मेक लॉज. स्टेट लिस्ट मैटर आर्टिकल 249. द ऑथोराइज द पार्लियामेंट ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर द यूनियन और स्टेट आर्टिकल 312. ओनली राज्यसभा के पास इनिशिएट रेजोल्यूशन रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 67. नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी. ड्यूटीज ऑफ द दिस पीरियड ऑफ द लोक सभा डिजॉल्व. इमरजेंसी स्टेज इन द प्लेस एवरी इफ द अप्रूव्ड बाय द राज्यसभा. Unity and the Rajya Sabha checks the hasty and the defective bills passed by the Lok Sabha by the making the amendments to them. The representation amends the experts that 12 nominated member import and the maintain the federalism, the reflection of the interest of the state. The position of the Vidhan Sabha. Vidhan Parishad. The position of the Vidhan Parishad and the utility of the Vidhan Parishad check. The hasty, defective and the clearance of the legislature facilities, representation, emitment, professional professionals and experts. The quality with the assembly introduced and the passage. Ordinarily bill, the disagreement Vidhan Sabhas will be prevails over the Vidhan Parishad. The ordinances promulgated by the governor. The tabled before the both the houses. Ministers can be the member of the either house. Condition of the reports. State Finance Commission CAG, State Public Service Commission. The enlargement of the jurisdiction. State Public Service Commission. Inequalities with assemblies.
Hmm. The money bill final power the passing the ordinary bills of the Vidhan Sabha. If the ordinary bill originate the Vidhan Parishad reject or the Vidhan Sabha death of the bill, Vidhan Parishad no power related to the demand for the grant and budget. Only the discussion, no voting, no power of the confidence motion. नो पार्टिसिपेशन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा में विधान परिषद जो होते हैं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा में द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स विल बी ऑफ द विधान सभा और द मोर इम्पोर्टेंट द विधान परिषद देन द विधान परिषद एग्जिस्टेंस ऑफ द विधान परिषद डिपार्टमेंट विधानसभा विधान परिषद में क्या होता है सब ऑर्डिनेट टू द विधानसभा ऑल मैटर्स राज्यसभा में क्या होता है इक्वल टू द लोकसभा ऑलमोस्ट द ऑल मैटर एक्सेप्ट फाइनेंशियल मैटर नो कॉन्फिडेंस मोशन द विधान परिषद वर्सेस विधान राज्यसभा राज्यसभा और विधान परिषद डिफरेंस देखते हैं राज्यसभा क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट होमोजीनियस बॉडी फेडरल स्ट्रक्चर होती है राज्यसभा में रिसीविंग बॉडी होती है राज्यसभा एंड लोकसभा द इक्वल इन द मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स में इक्वल होती है राज्यसभा विधान परिषद द हेट्रोजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन नो फेडरल स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंस होती है डिलोटरी एंड डिलेइंग बॉडी होती है यील्ड to the Vidhan Sabha popular houses British model in the British House of the Lord can't be opposed the House of the Commons House of the Lords the dilatory chambers can only delay the bills the ordinary bills 1 year money bill 1 month क्रिटिसिज्म ऑफ द विधान परिषद सेकेंडरी चैम्बर होता है कॉस्टली अफेयर होता है वाइट एलिफेंट्स बोलते हैं इसको एंड द कॉस्टली ऑर्नामेंटल लग्जरी होते हैं रिफ्यूज द डिफेंड एंड द डायरेक्ट इलेक्शन होता है अलाउंग अनपॉपुलर लीडर्स टू बी बिकम द मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स the powers and the function of the Parliament of India. The legislative powers and the function. The primary function make rules and the exclusive power to law making union list matter 98 subject. Exclusive power law making resolutory list matter article 248. Ordinary power may make law making concurrent list matter are 52 subjects and the parliamentary power to make laws state list matter Rajya Sabha passes a resolution article 249 national emergency article 250 and two or more state requests to the parliament article 252 give effect the agreement of the treaties article 253 President's rules article 256 the approval ordinances promulgate the president 6 weeks reassembly the parliament make laws the authorize the executive details the rules and regulation delegated resolution subordinate legislation and delegated resolution make by the executive place before the parliament and secretary exclusive powers and the function parliamentary control over the government and the executive question hours 0 hours half an hours discussion short duration discussion calling attention motion adjournment motion no confidence motion and censure motion cut motion the parliamentary committees the scrutiny government policy and action the council of minister collective accountability lok sabha confidence lok sabha in the union council of minister no confidence motion rejection motion of the thanks
rejection money bills, the passing the censure motion or the adjournment motion, signing the single and the dissatisfaction with the government, the passing the cut motion, rejectory ordinance bills, rejecting the demand for grant appropriation bill. Role of the parliament, select a group from the government, support them, and in the no confidence the remove them. The finance power of the financial power and the function. Article 256. All taxes laid and collected authority of law passed by the parliament slash legislature. And money from the all expenditure withdrawal cut of consolidated fund of India approved by the parliament. Financial committees of the parliament. Public accounts committee, estimate committee, committee on the public taking, the scrutiny financial performance and the spending, financial control over the government, budgetary control, the post budgetary control, money granted to the government not spent on the end of the year. The returned the consolidated fund of India. Rules of the laws, the march the laws by the department and minister, constituent powers and the function. Parliament में the power to amend the constitution, a special majority each houses. The majority of the total membership of the house plus majority of not less than two-thirds of the members and the present and body. State legislature में क्या होता है? No power to amend the constitution. Power to amend the constitution not unlimited, subject to the basic structure of the constitution. A judicial power and function. They impeach the president of India violation of the constitution. Remove the Vice President of India power to remove the judges of the High Court and the Supreme Court, Chief Election Commissioner, State Election Commissioner, and CAG. I recommend the President find the final order passed by the President punish the members of the outsider breach of the privileges. A presiding officer में tribunal powers access to the anti-defection. Electoral powers of and function. Parliament, election of the president, vice president, deputy chairman, speaker, deputy speakers, laws and regulating the election of the above officer, and laws relating to the general election, the laws made by the parliament, presidential and the vice presidential election act 1952, representation of the people act 1951. Representation of the People Act 1950, the other power and the function, discussion issue national and the international importance, approves the emergency national and state and financial, creates abolishes the state legislative council, no recommendation of the state assembly, changing the area name and boundary, state and union treaties, regulates the organization and jurisdiction. Supreme Court and High Court. Ineffectiveness of the Parliament. The member of the Parliament limited time and expertise, and keep a check and administration. Demand for the grant very technical. Member and unable to understand technical aspects. Size of the Parliament large, make a effectiveness. Majority of the government Lok Sabha, and reduce the scope of the criticism. The financial committees scrutinize the finance after the expenditure has been made, not before the expenditure. Guillotine motion, reduce the scrutiny over demand for grant. Dialectic legislation. Reduce and role of the parliament making detailed laws, raising the numbers. Ordinances में काम आता है. Lack of the strong study and opposition. Sovereignty of the parliament, parliamentary sovereignty. British क्या होता है? Doctrine of the parliament, sovereignty, supreme power. पार्लियामेंट में क्या होता है? नो रिस्ट्रिक्शन, अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्स ऑफ द ब्रिटेन में क्या होता है? पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में क्या होता है? मेक अपील, अमेंड एंड एनी लॉ. सेम प्रोसेस, constitutional amendment and ordinary law. The parliamentary law can't be declared unconstitutional by the judiciary.
Restriction on the Indian Parliament. Written Indian Constitution. Parliament operate within the limits set by the Constitution. Can't go against the basic structure of the Constitution, system of the check and balances, federal system of the government, normal circumstances. The parliament can legislate union and concurrent list matter and not on the state list matter. UK में unilateral system can legislate on any matter. Judicial reviews. Independent judiciary with the power of the judicial review. Restriction on the power of the parliament if any laws against the constitution ultra virus. Fundamental rights. Article 13. The state no laws against the fundamental rights. The Indian Parliament more likes USA Congress. Restriction by the Constitution. Federalism. Judicial review. Parliamentary committees. The parliamentary committees. Parliament has no time or expertise. Make a detailed scrutiny legislative measures and the other matters. Committees में क्या होता है? Assist the discharge of its duties. No, the Constitution of India mentions the committees make no specific provision, composition, tenure, function, etc. To be the decided rules by rules of the two houses. Parliamentary committees appointment or the elected house or nominated by the speaker or chairman. The work direction of the speaker slash chairman. The present is report house to the speaker slash chairman. The house as a secretary provided by the Lok Sabha or Rajya Sabha. Consultative committee. No parliamentary committee. Don't fulfill above the our four condition. स्टैंडिंग कमेटी 6 कैटेगरीज टाइप का स्टैंडिंग कमेटी है. पहला फाइनेंशियल कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग. सेकेंड का होता है डिपार्टमेंटल रिलेटिंग स्टैंडिंग कमेटी 24 है. थर्ड क्या है द कमेटी ऑन इन इंक्वायरी कमेटी ऑन द पिटीशन, कमेटी ऑन द प्रिविलेजेस एथिक्स कमेटी. फोर्थ कमेटी ऑन द स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल. Committee on the Government Assurance, Committee on the Subordinate Legislation, Committee on the Paper-led Table, Committee on the Welfare of the Supreme Court and SC and STs, Committee on the Empowerment of Women. A joint committee on the office of profit. 5 committee and relating to the day-to-day businesses of the house. The businesses advisory committee, committee on the private members bills resolution, rules and committees, committee on the absence of the member and sitting of the house. 6 at the housekeeping committee on the service committee, general purpose committee, house committee, and library committee, joint committee on the salary allowance of the members. एड हॉक कमेटी 2 टाइप का होता है. द इंक्वायरी कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी. इंक्वायरी कमेटी में कंस्टिट्यूटेड टाइम टू टाइम आइदर द टू हाउसेज आर मेंशन adopted or the speaker or chairman. Purpose of the inquiry and report certain matters. Example railway convention committee, committee on the MPLAD, joint committee on the scrutiny, parliament complex advisory committee. Include select or the joint sitting committee on the bill, appointment by the consider report, parliamentary bill, discussing features concerned with bills, procedure in the rules of procedure, direction by the speaker and chairperson. Bill come houses general discussion, house of the decide to the refer to the selected committee or joint committee, and the motion moved adopt the house in the which the bill is come in the consideration. Discussion convened on the other. The member of the house nominated member to the serve the committee, the select or joint committee caused by the
cost considers of the bill. The advantage can be the removed in the committee's advice. The public bodies and expert can be taken after the consideration. Committee submitted report. House member up against the majority report. Dissent notes. The financial committee. The public account committee first set up 1921. प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 कंपोजिशन में देखे थे 22 मेंबर्स फॉर 15 फ्रॉम लोकसभा 70 फ्रॉम द राज्यसभा मेंबर कैसे होते इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर अमंग्स द देमसेल्फ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑल पार्टीज ड्यू रिप्रेजेंटेटिव टर्म्स ऑफ द ऑफिस 1 year मिनिस्टर नॉट अ मेंबर ऑफ द कमिटी chairman and the committee appointment amongst themselves by the speaker convention chairman on the committee opposition party major function examine annual audit report and the control comptroller and auditor general of india cag reports laid before the parliament by the president three reports of the CAG audit reports on the appropriation account audit report on the finance account audit report on the public undertakings committee on examining the public expenditure and the legal and the formal point of view and the view of the economy procedure wisdom appropriation bring the cut by the waste loss and corruption expenditure efficiency details of the function examine the appropriation account finance account union government any other accounts laid before the Lok Sabha appropriation account. The compare the actual expenditure with the expenditure and sanctioned the finance account annual receipts and the disturbance and the union government scrutinize the appropriation accounts plus the audit report CAG satisfaction of the committee money disbursed legally available applied by the services or purpose expenditure authority and the government is the reappoint appropriation of fund in the accordance with the related rules examine the accounts state cooperation trading concern and the manufacturing project audit report of the CAG on them the experts in these public undertakings with the allocated to the committee on the public undertakings examine the accounts autonomous and the autonomous and simultaneous bodies audit conducted by the CAG consider a report of the CAG account of the studies and the stock examine the money and spend any service in excess accounts for the granted by the publics the committee assisted by the CAG guide the present and present philosophers the the limitation of the public accounts committee not concerned of the question of the policy in a broader sense the conduct the sports and conduct the post from the examine the accounts can't intervenes the matters of the day-to-day administration recommendation advisory not the vested power of the allowance of the expenditure not an exclusive body can't be issued the order and the parliament financial decision of these findings एस्टीमेट कमेटी ओरिजिन कैसे होता है स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी सेटअप इन द 1921 फर्स्ट एस्टीमेट कमेटी 1950 रिकमेंडेशन ऑफ द जॉन मथाई फाइनेंस मिनिस्टर द मेंबर्स 30 होते हैं ऑल फ्रॉम द लोकसभा नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेड लोकसभा में एवरी ईयर फ्रॉम द अमंग्स इट्स मेंबर अप्रोप्रिएशन रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑल पार्टीज ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन टर्म ऑफ द ऑफिस 1 year मिनिस्टर नॉट अ मेंबर होते हैं चेयरमैन जो होते हैं अपॉइंटमेंट बाय द स्पीकर फ्रॉम एंगमस इट्स मेंबर फ्रॉम इट्स रूलिंग पार्टी फंक्शन जो होते हैं एग्जामिन एस्टिमेट इंक्लूड इन द बजट सजेस्ट द इकोनॉमिक एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब एज अ कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटी फंक्शन
The improvement efficiency and administrative reform in an economy related estimate. The suggest alternative policy for the efficiency and economy examine money well and the lead within the limited and estimate suggested from the estimate to be the presented parliament committee not exercise function public undertaking allocated of the committee on the public undertaking continue examination of the estimate from the throughout the financial year report to the house regularly no necessary for the committee examine the entire estimate of the any 1 year demand for the grant voted even if the committee has been made on a report. Estimate committee reason for the ineffectiveness examine the budget estimate after they have been the voted by the parliament not before them and not can't the question policy laid down by the parliament recommendation are the advisory not binding examine the every years only the certain selected ministers and the departments by the rotation not the minister and department covered the lacks of the experts assistance of CAG available to the PSC. Committee on the Public Undertakings. Thus created in 1964 recommendation of the कृष्णा मेनन कमेटी 22 मेंबर्स होते हैं 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से आते हैं मेंबर इलेक्टेड बाई पार्लियामेंट होता है 1 साल के लिए बनता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है सिंगल ट्रांसफर वोट से ऑल पार्टी से ड्यू रिप्रेजेंटेशन करते हैं इनका 1 साल का टर्म होता है मिनिस्टर नॉट अ मेंबर ऑफ द मिनिस्टर कमेटी का मेंबर नहीं होते हैं चेयरमैन स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है उन्हीं में से मेंबरों में से ऑलवेज फ्रॉम स्पीकर राज्यसभा के मेंबर नहीं चेयरमैन बनते हैं फंक्शन देखें तो एग्जामिन रिपोर्ट करती है अकाउंट पब्लिक अंडरटेकिंग का फिर रिपोर्ट फ्रॉम द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को एग्जाम करती है पब्लिक अंडरटेकिंग की भी एग्जामिन अफेयर भी करते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग इमर्जेशन अकाउंट साउथ बिजनेसेस का प्रिंसिपल कंडक्ट बॉन्ड कमर्शियल प्रैक्टिस अदर फंक्शन वेस्टेड इन पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी को भी एग्जामिन करने अंडरटेकिंग एलोकेटेड इस स्पीकर कमेटी जो है नॉट अलाउ करता है टू नॉट डू फॉलो कमिटी विल नॉट डू द फॉलोइंग क्या करती है नहीं करती है मैटर्स ऑफ द मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर्स टू डे टू एडमिनिस्ट्रेशन मैटर टू कंसिडरेशन ऑफ द इस मशीनरी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल स्टेटस रीजन फॉर द इफेक्टिवनेस कान टेकन ऑफ द एग्जामिनेशन मोर देन द 10-12 public undertakings in a year does not look the technical matters members the not technical experts and the recommendation advice is not binding